Good evening, everyone. Anyone, any doubts? Good evening, everyone. किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं? गुड इवनिंग रोहित. चलो, let us wait for 1 or 2 minutes. उसके बाद में we will start. We will do the revision what we have done in the previous class, and then we will start. I hope everyone have received the IE 16 ka notes. Yesterday I have shared in the group. Yes. Yes, okay then. Let me share this one also. IFRS 18. FR. IFRS 18 इसमें September batch. You got it. Chalo, chalo, chalo. Good evening, everyone, once again. So, can we start? Yes. रोहित सर स्टार्ट करें. हाँ. Others? Yes, sir. Yes, okay. खाली दो जने ही है क्लास रोहित.
Rohit, only two are there or others are also there? पता नहीं सर अभी सब कहाँ है. तो आप ही बोलो, you only say me. If you just listen, will this be good? हाँ, कुछ मजा आएगा क्या पढ़ने में? कभी नहीं नहीं नहीं. आता मजा. ये मूवी नहीं है कि एकला बैठ के देख सकते अपन सब 3 घंटे. वो नहीं है ना. नहीं नहीं. ओके, कोई नहीं, चलो. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. दिस शुड बी देयर. चलो देन. सो इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड विद व्हाट? बेसिक. हमने डिस्कस किया था सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. एंड आई मेंशन जो क्लास 11 12 में किया वही उसका एडवांस है, बस दूसरा कुछ नहीं. एंड द एफआर पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑडिट एंड ट्रिपल ए एज वेल एज एसबीआर. Then we had discussed asset, liability, income. We had taken the example, or then we started the discussion. Journal entry, ledger, trial balance, and your financial statements which we prepare. ये सारा कुछ discussion था. This was your paper pattern. This was the syllabus which I had mentioned. Then we had discussed the hack to pass FR exam. What should we do? Then from here we started a discussion. So first we started a discussion regarding financial statements. So there are 5 financial statements: concept, balance sheet, P&L, cash flow, changes in equity, and notes to account. And why do we prepare this? For the stakeholders so that they can make the decision. And under equity we have discussed what will come: share capital, share premium, retained earnings. And जो भी change रहेगा during the year, if there is a change, this will shown in statement of changes in equity. We had seen this. Then we had started the discussion regarding asset. हमने discuss क्या किया? The first thing, asset. Asset is what? A present economic resource controlled by an entity as a result of past event. So हमने बहुत सारे example लिए थे: land, building, machinery, PP, receivable, a lot of things. Then I mentioned the term control. I mentioned, does control means ownership? No. Control basically means you can take the economic benefit. You as a person, if you have a machinery, we take the entire benefit and we restrict some other person to take the benefit. Liability का meaning क्या था? So liability means a present obligation. Today we have a duty, a responsibility to pay someone. What? Transfer economic resource as a result of past event. Something we have done in past. That is the reason. Then equity. What does equity means? Equity means residual interest in the asset of the entity after deducting all its liabilities. So then we have learned the accounting equation: asset is equal to liability plus capital. So we had seen what is equity. This equity is also known as what? Net asset. Then we started a discussion regarding income. In this we have seen what? Increase in asset. If the asset is increasing, that means the example of cash sales. Or decrease in liability, like if I've given a loan and you're not paying me back, so that will be this example. Then we have mentioned that excluding contribution from equity shareholders. If the equity shareholders are contributing, will this be an income? कभी भी income नहीं होगा. वो क्या होगा? Capital contribution. Then we had started with the discussion of expense. Expense means what? Decrease in asset, like the example of depreciation which Rohit has mentioned. Then increase in liability that results in decrease in equity, but will not include what? Dividend payment. Your dividend payment will never be a expense. Then we started a discussion regarding underlying concept and principle. Give me 1 minute. Okay, chalo, come back. Sorry for the disturbance. So then we had started a discussion regarding accrual basis. Accrual basis means what? We should record the expense and income when they occur, not when cash is received or cash is paid. Then we had seen what? Matching principle. Matching principle means expenses and income should be matched in the current period so that true profitability is present. Then assumption of going concern, what did I mention? The assumption is what? That the business will continue for future. Then prudence concept says what? Prudence concept will say that do not overstate your asset or income, do not understate your liability and expense. Then substance over form. In the substance over form, what did we see? We have to see the economic substance, not only the legal form.
See why these keywords are important. If you're very lucky, I say not lucky. If you're very lucky, 2 marks MCQ question आ सकता है section A में. What does asset means income? Very rare, but if you're very lucky, as mentioned, a question can come. So this was the example which we had seen for substance over form. Then we started a discussion regarding what? The formats. First, we had started a discussion regarding the balance sheet format. हमने डिस्कस किया नॉन करंट एसेट वी रिकॉर्ड पीपी, intangible asset, investment property, goodwill, and your IFRS 9. Current asset में cash, inventory, trade receivable. Then we have seen a separate line item known as non-current asset held for sale. As mentioned, once we come to this topic, you will understand. After this, we have seen the format for equity and liability, share capital, share premium, retained earnings, OC. Now, yesterday I mentioned what? Other component of equity किधर से आएगा? This will come from P&L. Under P&L we had OCI. From OCI it will go to OC. So what are the two topics which are important for FR? Revaluation surplus in IAS 16 and fair value gain or loss that we will cover in IFRS 9. Non-current liability example like a loan, lease, deferred tax will cover. Deferred tax kya? Government grant is what? We'll cover each and everything. Current liabilities, trade payable, bank overdraft, short-term borrowings, lease, income tax. Then we have a total equity and liability. So your total equity and liability will tally with the total asset ka value. Then the format of the P&L. And I mentioned कि P&L का format change हुआ. So this attempt also, the September attempt, which was a question was regarding P&L only. Question for consolidation भी P&L था, single entity भी P&L था. So for December also, hoping that this will continue P&L questions. So what is the format? Revenue, cost of sale, gross profit margin, your operating expense. Now operating expenses, we'll see what are the different types of operating expenses. Now operating का term का meaning क्या है? Operating means whatever is the income or expenses relating to your business. Now when we study each and every chapter or each and every standard, I will be saying the term operating, I will be saying the term investing, I will be saying the term financing. So it should be clear क्या किधर जाएगा. In investing income, it's not for your main business, it's just for investment purpose. Like if I have done a fixed deposit in the bank, I'm getting interest, or I am getting some dividend income, etc. This creates a profit before financing and income tax. We have interest expense. Interest expense, like if you have taken a loan, we pay some interest. Then we have profit before tax, profit for the year. This profit will go to retained earnings. Then other comprehensive income. What did I mention in this? Revaluation surplus and fair value through OCI, frequently tested. And these are the two important topics. So this will be recorded in OCI. Through OCI, it will go to OCE. Then statement of changes in equity for the year. First, we write down share capital, share premium, retained earnings, revaluation surplus, fair value through OCI, total. Opening balance, we write down the opening balance. We do some retrospective adjustment. You will understand this later. Then during the year, if shares are issued, share capital will increase, share premium will increase. Then profit and OCI we will share. Then any dividend is paid, we reduce from the retained earnings, we get a closing balance. Till here, we are done in the previous class. Yes or no? Anyone, any doubts? I hope किसी को कुछ doubts नहीं है इस topic में. हाँ सर, चेंज इन इक्विटी में मुझे पहले कुछ समझ नहीं आया था. चेंज इन इक्विटी, जब आप चेंज इन इक्विटी में सर. Change in equity हाँ. in the यस statement सर. or this one? हाँ यस सर, जो आपने पढ़ाया था स्टार्टिंग में चेंज. हाँ यस सर, स्टेटमेंट में जो चेंज इन इक्विटी आपने बोला था. Ah, yes, 1 minute, 1 minute. This one, how will equity change? हाँ यस. अभी इक्विटी यस सर. कैसे यस चेंज? सर. कहने से हम इक्विटी में क्या रिकॉर्ड करते बेटे? वी रिकॉर्ड शेयर कैपिटल, वी रिकॉर्ड शेयर प्रीमियम, हाँ. रिटर्न. अब ये कैसे हाँ. चेंज होगा? हाँ. टुडे इफ आई से कंपनी हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ हाँ. $10,000. If the company is issuing हाँ. new shares, if the company is issuing हाँ. new shares, can I say the number of हाँ. this share capital will increase? तो वही तो है. यस सर. ओके ओके सर.
I hope everyone can see this notes. Now ये जो IFRS 18 है ना, this IFRS 18 which is that this is a new standard which has been introduced by IASB. So this standard has replaced which standard? IAS 1. पहले IAS 1 था. Now this is not that. This is tested for FR as well as SBR. A very important point. So now this standard, ये जो है ना पूरा standard, this standard is full of theory. So what we will do every day, we will try to cover some part of the standard, and then we will start with the main standards, your IAS 16, IAS 38 ऐसे. So now please read this everyone. जो first exam advice I have written, no, everyone please read this. इसको लिखना नहीं है. Do not waste your time writing this. What is the examiner saying you? Anyone? सर इंग्लिश ही तो लिखा है सर. इसमें क्या लिखा हुआ है? What they have written? From September exam for FR and SBR, IAS 1 will not be tested, but IFRS 18 will be tested. So simple point. Now this standard is very big, और इसमें बहुत theory है. But as mentioned, every day we will try to cover 3 to 4 points. And this IFRS 18 will include the format of your P&L balance sheet again, which we have already covered. So it will be a revision. Now see the first thing, the objective of the standard. What is the objective of IFRS 18? Simple. What is the objective? Presentation and disclosure of information. For what? Why do we disclose the information? Why do we prepare balance sheet and P&L? किसके लिए बनाते हैं अपन? For the stakeholders. So now to what? These financial statements are prepared. The information is presented in the general purpose financial statements to ensure that they provide what? Relevant information that faithfully represent an entity's asset, liability, equity, income, and expense. We have already discussed what is an asset, what is liability, equity, and income and expense. So this is recorded in what? Balance sheet, P&L, these figures to give what? The term known as what? Relevant. And what? Faithful representation. This again will come in your conceptual framework. ये जो भी मैं सिखा रहा हूं ना अभी conceptual framework में repeat होगा. Now what does the term relevant means? Anyone? हाँ. What does the term relevant means? रोहित सर. हाँ सर, नहीं नहीं Relevant. पता. हाँ. रिलेवेंट जो इंफॉर्मेशन आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड है, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो डिसरिलेटेड नहीं है. Okay, disrelated नहीं है. Okay, others. अभी I'll give a small example. Something that is important. Something that is important. Okay, the term important. Okay, very good. सर जो किसी चीज के इंफॉर्मेशन दैट लिए इज इम्पोर्टेंट है, वैलिड. रिलेटेड. One by one, one by one. हाँ. इंफॉर्मेशन दैट इज वैलिड एंड अप्रोप्रिएट. Valid and appropriate. Okay. और कुछ दिमाग में आ रहा? बता दो. which is useful. Which is useful. Okay. अगर relevant होगा तो useful होगा ही होगा. Now let me take an example. अंबानी का example लेते हैं, मोटा भाई. Example. Now this is Reliance company. Now I say that Reliance company purchased a 100 rupees का asset. ये asset है. Now Reliance company did not record this 100 rupees का asset. Will this affect stakeholders, shareholders? नहीं नहीं, एक्सपेंस आउट कर देंगे वो. नहीं ना. They will expense. Either they will not record expense also, they will not record as an expense. Will this affect you? नो नो. No, no. अगर मैं बोलूं, if Reliance company has done a purchased a, let me write down.
$10 million of asset. Reliance company has purchased the asset, but they have not recorded in the books. Mota bhai ne asset kharida, but record nahi kiya. Now you only say, as an investor in Reliance company, is this information relevant to you or not? Yes. Why relevant to you? 10 million Yes, amount sir. है. Can I say 10 million? Because It's a very it's big related amount. to the और it is related to the company and फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम दिखाएंगे हम ये ड्राइंग्स कर रहे हैं या कंपनी के लिए कर रहे हैं Yes. एंटिटी के लिए कर रहे हैं. Okay. So can I say, when we decided the term relevant, sir, relevant का meaning क्या है? Relevant can I say which is important for whom? Stakeholder. Sir, अभी कैसे मालूम पड़ेगा? How we will get to know whether this information is important or not? Now one more example I will take. Today, Reliance has directors. One director is there known as Raju. Reliance company has a director known as Raju. Now Raju has taken a bonus of $10,000. Is this relevant for you as a stakeholder? No. Yes, sir. Yes, someone is saying yes, some is saying no. Okay, कोई issue नहीं. Now, if I say Raju has taken a 10,000 rupees of goods from Reliance and he has not recorded this in the accounts. Related party information. Okay, related party. But I say Raju is a director. He has taken 10,000 worth of goods from Reliance company for his use. और उसने क्या बोला अकाउंटेंट को? ही सेइंग टू द अकाउंटेंट, डू नॉट रिकॉर्ड दिस, रिमूव दिस, डू नॉट शो ओनली दिस, कि इन्वेंट्री है ही नहीं, इन्वेंट्री डैमेज हो गया. नाउ यू ओनली से, इज दिस इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट टू यू और नॉट? Yes. Yes, important. Yes. Why important? Can I say it is very important? Because here, who is that? A director. Now see here, even though the amount is small here, but information relevant hai ki nahi? Yes. Yes. So is it compulsory that information only will be relevant if the number is big? No. No. It can be, we have to put the judgment. We have to decide based on the judgment. So now, what is the first thing, sir? How we will decide whether information is relevant? Either by seeing the number or either by seeing the nature of the transaction. So now this, when we decided sir 10 million, this will be known as materiality. इसको क्या बोलते हैं? Materiality. Material. So what does materiality means? जो material है, which has a very big number. Or now how did we decide this 10 million is important? Now in company this materiality, can I say ये materiality जो level है will vary from company to company. If I see Yes. my company, from our company's point of view, 1,000 rupees is also very important. But for Reliance, 1,000 rupees important nahi. So this term relevant is in detail. So I've given the basic logic here. Once we again come to conceptual framework, we will discuss in detail. So I hope this is clear to everyone. Material relevant का meaning क्या है? Now faithful का meaning क्या है? Can anyone say me faithful? Faithful means what? जिसमें कोई गलती नहीं है. गलती नहीं है. Okay. Then Reliable है sir. reliable है. Okay. Faithful meaning what? I say today I purchase a asset for 1,000 rupees. I say that please show this asset for 2,000. Am I being honest here with the stakeholder? No. 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 So faithful Sir. representation का meaning क्या? Basically faithful representation means there should be no issues, there should be no errors, there should be no mistake, etc. These are the basic things which you have to keep in mind. So सबको समझ में आया? The objective of IFRS 18 क्या है? To present balance sheet and P&L which present what? Relevant information and which is presented faithfully. So this is the objective of IFRS 18. Now please see the objective of financial statements. Why do we prepare financial statements? ये सब important है section A MCQ के perspective. Very important from section A MCQ perspective. As mentioned, section A theory questions will be lost, will be more. So each and every point will be important. Now, why do we prepare financial statements? Sir, we prepare financial statements to provide what? Information about the entity's asset, liability, equity, income, and expense. That is useful to who? Useful to Users. stakeholders. Stakeholders, the users. Now, why? What will the stakeholders do? What will they assess? They will assess what? Future cash flow, sir. So in future, what will be the cash flows?
Now see here, the user has been defined here. User का meaning क्या है? Investors, lenders, etc. So basically in your class 11th and 12th, the thinking was what? कि सर यूजर कौन है? सर गवर्नमेंट भी है, एम्प्लॉय भी है, नॉर्मल पब्लिक also are users. But now the IFRS is saying what? We have strictly defined user कौन है? User are lenders, investors, or if a person or an entity is giving a loan, so these becomes what? The users. पहले अपन क्या बोलते थे? Users. When coming to your financial management, users are what? All the stakeholders. But when coming to the FR, IFRS 18, your conceptual framework is saying what? The users we have limited. Your investors, lenders, etc. So government, etc. are also important, but they have specified this. This detail the examiner will not ask you, but what can the examiner ask you? Why will the users use the financial statement? To assess what is the future cash flow. And next one, what is this? Management stewardship. इसका meaning क्या है? Management stewardship. Anyone? नहीं मालूम है. Now, if I say today you have invested in Reliance company, will you manage the business? Let's take you have 40% of Reliance. Will you manage the business or someone else will manage the business? Someone else, Someone else. directors, Can I say directors, then managers, managers. etc. So now as an investor, why will you say Reliance company to prepare balance sheet P&L? Can I say you as an investor, you will get to know whether the directors management are working properly or not, whether they are making profit or not from the company, whether the business is growing or not, whether the directors and managers are managing the funds properly or not. उसको क्या बोलते हैं अपन? Management stewardship. So read this. How well the management is managing the company's assets and the obligation, the liabilities. Clear to everyone? Yes. Now see, complete set of financial statement. What are the financial statement? We have already discussed. Statement of financial position, that is your balance sheet. Statement of financial performance, that is your profit or loss and other comprehensive income. Then statement of changes in equity, statement of cash flow, and notes for the reporting period. Now, these are the 5 important financial statements. Now, if I say Reliance company is there, Reliance company is giving you the balance sheet and P&L for 2000x6. Now, this year balance sheet P&L is given to you. Now, you only say me, will you be able to compare this? Comparison कर सकते हो क्या आप? नहीं. नहीं? Yes, also no, also yes or no. This 2000x6 का information you can compare with some other company. You will Yes, get yes, to yes. know whether Reliance company is doing good or not. Yes, What yes. is the other thing? Can I say Reliance company should also provide 2000x5 का info, balance sheet, Yes, yes. so that you get to know पिछले साल से इस साल में कितना difference है, Yes, yes. how much is the revenues increasing. So when coming to financial statement, this is also a financial statement which should be provided for comparison purpose. So see here. Yes, yes. Comparative information for preceding periods for comparison purpose. So see here now, IFRS 18 does not mandate the use of specific names for individual financial statement. It's not compulsory to use statement of financial position, etc. You can use balance sheet also, etc. But exam mein, we have to use what? Statement of financial position, statement of profit and loss, and other comprehensive income. This is सर clear. फॉर कंपैरिजन, Yes. सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कंपैरिजन के लिए, बट वो हमें पिछले साल का भी तो देखना पड़ेगा कितना हमने इस साल प्रॉफिट वगैरह कमाया है, Yes. तो Yes. Yes, that is the reason that the company will give previous year. See, it depends on company to company. Some company will say only will give 1 year data. Some company will say will give 2 years data. That depends upon company to company. ओके सर. Okay, chalo then. ओके. So this part is also done. Now coming to the next part, frequency of reporting. Now we have seen reporting. Now you only say balance sheet P&L कब बनाना चाहिए? After 3 years, 4 years, or every year? Every year. Every year. Every एवरी year. ईयर. What is the basic year?
The basic is 52 weeks reporting period, a basic. That depends to country, but what is the basic assumption? Every year we have to publish the financial reports. But for listed companies, जैसे इंडिया में भी listed companies है ना, every quarter they publish the results. So that depends upon the country to country and the rules and regulations. सर आप प्लीज So like रिपीट कर सकते हो क्या क्या बोले वो घर से कॉल 52 आ week गया था reporting period. इम्पोर्टेंट Frequency of reporting का meaning क्या है? हाँ Basically, yes sir. that means अगर आज बैलेंस शीट पीएनएल बना है, आफ्टर हाँ हाउ मेनी इयर्स विल यू प्रिपेयर बैलेंस शीट पीएनएल? 4 साल के बाद में क्या? नहीं, नहीं नहीं every 12 months. Basic idea is what? After every 12 months we have to prepare, so that we get a understanding about the company. As we say, no sir, हर साल में बर्थडे आता है, वैसे ही हाँ कंपनी का बर्थडे क्या है? 52 बैलेंस शीट ओके पीएनएल सर को इशू करना, बस सिंपल. यस यस So these are the some points which we have discussed. Now coming to this one, अभी ये तो समझ में आएगा नहीं ये पॉइंट. Everyone have a good idea about LIFO क्या है, weighted average cost क्या है, FIFO क्या है? थोड़ा बहुत आइडिया है? यस यस Yes, what is LIFO, what is FIFO? Yes Others? sir. I Yes want sir. others. मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री में Okay, कैलकुल methods. Yes. मेजरमेंट Okay. So now today I say that the company is saying that we are recording inventory. Now inventory is recorded at what value? आपने सीखा होगा ना, किधर ना किधर तो. कॉस्ट और एनआरवी विच आर Lower cost or एनआरवी NRV, whichever is lower. सबको मालूम है क्या ये? Yes, sir. Yes sir. Others, please say me. Yes, sir. Yes, okay then. So now I say that the company is saying that we follow FIFO. FIFO का मीनिंग क्या है? जो पहले अंदर आएगा वो पहले बाहर जाएगा. Simple. What यस comes यस in, Yes, sir. First that in, goes first out. out. First in, first out. I hope everyone knows. If I say LIFO का मीनिंग क्या है? Last in, first out. फर्स्ट आउट यस So now you Last in first out. last in, first out. So now I say the company is saying that we follow FIFO. ये करंट ईयर में कंपनी क्या फॉलो कर रही है? FIFO. नेक्स्ट ईयर दी कंपनी सेइंग वी विल फॉलो लीफो. उसके बाद में दी कंपनी सेइंग अगेन वी फॉलो फीफो. उसके बाद में लीफो. नाउ यू ओनली से एज एन अकाउंटेंट, इज दिस गुड टू डू? नो नो नो. व्हाई? वो No sir. कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा अकाउंटिंग पॉलिसी Sir में it consistency नहीं. हाँ. Consistency. So can I say if we are keep on changing the accounting policy, will the stakeholder understand? अकाउंटेंट को भी इतना नहीं समझ में आएगा, इतनी बार घुमा देगा तो क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं समझ में आएगा. एज अ अकाउंटेंट इफ वी do a lot of changes, it is difficult for the managers also, but from the stakeholders point of view बहुत difficult हो जाएगा. So what is this now? So see here now, consistency of presentation, disclosure and classification. So consistency should be there. Sir, can we change? Sir, हम change कर सकते हैं क्या accounting policy को? Yes. This we will cover in more detail when we come to IAS 8. When can we change? We can change when it is required by any IAS or IFRS. अगर IAS IFRS ही बोल रहा है कि change कर लो, तो no issue, अपन change कर लेंगे. If IAS and IFRS is not saying, sir, but can we still change it? Yes. When it provides कॉर्पोरेट more appropriate information, it is relevant यस to the stakeholders. You say, sir, if we record this at FIFO, it will provide better information rather than LIFO. You can do this. So till here, these are the points which we have covered. आज के लिए बस है इतना थियरी. So with this, the basic part we have done. Now, chalo, let us start with the first. Now I want everyone to be active and write down and make your running notes. So we will be starting with the part 1. Which standard? सबको क्लियर है एसेट लायबिलिटी क्या है, और एवरीवन द बैलेंस शीट फॉर्मल P&L सबको क्लियर. द फर्स्ट स्टैंडर्ड which will be starting is what? IAS 16, a very important standard. This I will do in detail. I will do
in detail so that the coming 4 to 5 standards will be easy. अगर ये समझ लिया, coming 4-5 standards will be same only. So IS 16, what is the name of the standard, sir? Property, plant and equipment. Now what are the examples for IS 16? Machine, sir, building, sir, land. Then we say what? बस इतना लिखना. These are the examples. Now you only say me, ये जो IS 16, this machinery, building, land, is this a non-current asset or current asset? Non-current asset. Non-current. Basically 99.99% क्या होगा? Non-current asset. Non-current asset. Non-current. So can I say IS 16 को क्या apply होगा sir? It's an asset. So I hope सबको मालूम है asset का meaning क्या है? Future economic benefit. Now sir, this asset is what? A non-current asset. So under asset we have what? Two categories. Non-current asset and current asset. So non-current asset means what? Benefit for more than 12 months. Here benefit is what? Less or equal to 12 months. Now under non-current asset, what are the further things we have? Tangible, intangible. So tangible का meaning क्या है? We can touch. This, no touch. So under tangible asset, further classification क्या है sir? IS 16 PP और IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. सर इंटेंजिबल के लिए क्या है? IS 38. Done everyone? This सबको आता है, इसमें कोई इशू नहीं. Now what will I do? Before starting any standard, we will discuss some basic accounting terms which you have already covered in your class 11, 12th BCom. सर अभी जो Yes, 2 मिनट sir. पहले आपने बताया था फिर से रिपीट कर सकते हो? एक्चुअली कुछ इशू आ गया था, नेटवर्क इशू. कौन सा पॉइंट बेटे? सर जो भी आपने 1-2 मिनट पहले बताया, टेंजिबल. टैंजिबल. ओके ओके. सो असेट के अंदर दो कैटेगरी है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट. नॉन करंट एसेट मींस वेयर द बेनिफिट, जो हमको बेनिफिट मिलेगा फॉर मोर देन 12 मंथ्स. करंट का मीनिंग क्या है? लेस देन 12 मंथ. सो अंडर नॉन करंट एसेट वी हैव टू टाइप्स, टैंजिबल, इनटैंजिबल. सो टैंजिबल मींस व्हिच वी कैन टच लाइक योर प्लांट, मशीनरी. सर इनटैंजिबल का मीनिंग क्या? लाइक योर कॉपीराइट्स, गुडविल, पेटेंट, ऐसे ब्रांड एक्सेट्रा. वी कांट टच दिस. Under tangible, what are the two standards which will be covering? IS 16 PP and IS 40 investment property. Investment property का meaning क्या? Basically, you take a property, you give this on rent. And we will go into detail. What does this mean? Intangible, we will cover IS 38, this standard. So first, we will cover IS 16, उसके बाद में IS 40, उसके बाद में IS 38. This is the flow we'll continue for the coming 6 to 7 days. Now, before I start any standard, I will be discussing some basic terms. If you understand the IS standard, the standard will be easy. So, chalo now. Before that, whenever we learn any standard, few important points which you have to keep in mind. First, we will learn what? The definition, or you can say meaning of that standard. हमेशा जब भी अपन स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे? पहले डेफिनेशन और उसका मीनिंग. सेकेंड वन इज व्हाट? रिकॉग्निशन. रिकॉग्निशन का मीनिंग क्या है? शुड वी रिकॉर्ड दिस इन द बुक्स?
This means what? Should we record or not? Question. Abhi sir, recognition, okay sir, we should record. At what value? That is measurement. After this measurement, presentation. Presentation का मीनिंग क्या है सर? व्हाट शुड गो टू P&L, व्हाट विल गो टू बैलेंस शीट? सर नॉन करंट एसेट होगा, करंट एसेट होगा, क्या होगा? दैट वन. After this you have disclosure. Disclosure का मीनिंग क्या है? Additional information. Any additional information should be given or not regarding that standard. The last one, derecognition. Derecognition means what? If you're recording today something, derecognition means when should we remove from the books? If you learn this for every standard, your work is done. So पहले पढ़ेंगे मीनिंग और डेफिनेशन सर, उसके बाद में पढ़ेंगे रिकॉग्निशन, उसके बाद में पढ़ेंगे मेजरमेंट, then we will start with presentation, then we will start with disclosure, then we will discuss derecognition. Should we record in the books or should we remove? Now coming to your IAS 16, write down the important questions, a list of important points. The first type of question that mainly comes in the exam is what? Cost. This is what? Recognition. The first type of question that comes in the exam is cost recognition. Then revenue and capital expenditure. Revenue and capital expenditure. Then the next type is from measurement. Measurement. Questions will be from cost or revaluation. Sir, abhi ye revaluation kya hai? We'll come to this point. The next type of question is depreciation calculation. The next type of question which comes in the exam, component accounting. That means parts of the asset. Excess depreciation. Transfer. The next type of question. The seventh type of question that comes in the exam is your derecognition. Derecognition में क्या पूछेंगे एग्जाम में ना? गेन और लॉस. इफ यू हैव अ बिल्डिंग टुडे, आपके पास कोई मशीन है, अगर आप इसको बेच दोगे, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है? दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू फोकस. सबको क्लियर है? एनीवन एनी डाउट्स? सो ओके, सो टिल हियर किसी को कुछ डाउट नहीं. सो नाउ कमिंग टू सम important terms which we have to understand before starting the standard. Now everyone say me sir, depreciation का meaning क्या है? I hope everyone have a basic idea. Depreciation का meaning क्या है? Fall in the value of asset. Okay, fall in the value of the asset. Okay. Others? Decrease in the value of asset due to wear and tear. Wear and tear. Okay. Decrease
in the Value of asset value of due to asset wear and tear. due to wear and tear. Basic. ओके, ये सबको आता है, इसमें किसी को डाउट नहीं है. देन कमिंग टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या है? डे टू डे खर्चा जो ओके, रेवेन्यू डे है, टू डे. और जो लॉन्ग टर्म में खर्चा है वो कैपेक्स है। ओके, लॉन्ग टर्म. ओके, रोहित इज सेइंग दिस वन. अभी नाउ आई टेक अ एग्जांपल. मेरे पास एक बिल्डिंग है. इन दिस बिल्डिंग पेंटिंग वर्क इज गोइंग ऑन. दिस बिल्डिंग was already there. Again, I am doing painting. Will this be revenue expenditure, capital expenditure? रेवेन्यू। Revenue, okay. I say ये मेरे पास एक बिल्डिंग है. I construct one more floor on this. Revenue वो expenditure, कैपिटल है, capital expenditure. वो कैपिटल है। Capital Capital, expenditure. So basically, capital expenditure. revenue expenditure means what? Can I say this is done to maintain the asset? Yes or no? To maintain the asset. इससे कुछ फ्यूचर Yes, sir. इकोनॉमिक बेनिफिट्स, विल दी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज? कभी भी इंक्रीज नहीं होगा. थोड़ा बहुत हो सकता है, बट एट अ लार्ज पॉइंट ऑफ व्यू वी सी नहीं होगा. सर कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा? इंक्रीज इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन. ओके, डेप्रिसिएशन क्लियर है, ये क्लियर है. नाउ द थर्ड पॉइंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. डिस्काउंटिंग का मीनिंग क्या है? टू परचेस एट लेस देन शेयर प्राइस, सेलिंग प्राइस। ओके ओके, बिफोर, चलो कोई नहीं कोई नहीं, रिमूव दिस. ट्रेड डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट. बल्क में जो दिया है वो ट्रेड डिस्काउंट। ओके, सो ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग क्या है सर? ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन व्हेन वी परचेज, यस और नो? नाउ यस। सेटलमेंट डिस्काउंट का मीनिंग क्या है? टुडे आई सेल दी गुड्स टू यू. आई एम सेलिंग यू $10,000 का गुड. आई से दैट आई गिव यू अ डिस्काउंट ऑफ 1000. इसको क्या बोलेंगे? Trade discount. Now I say settlement discount means what? You have to pay me how much? 9,000. I say if you pay within 1 year, within 1 month, or within 15 days, I give you extra discount of what? 2,000. So ultimately, how much you'll pay me? 7,000. So settlement discount कब होता है? Settlement discount is only given to receive the payment early. Payment जल्दी मिल जाए. Okay. Now coming to the concept of present value. ये प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग क्या है? नाउ अ क्वेश्चन टू एवरीवन. टुडे आई हैव 1 रुपीज. लेट्स टेक आई बाई अ चॉकलेट ऑफ 10 रुपीज डायरी मिल्क. कितना आएगा इसमें? 100 ग्राम्स. यस। एग्जाम्पल, हाँ, आर्ग्यू मत करना सर. 10 रुपीज. आफ्टर 2 years, will I still pay 10 rupees and still I will I still get 100 grams? नो नो। No, No, sir. sir. No, why? No. इन्फ्लेशन। हाँ, Due to inflation, इसकी present value change हो जाएगी. ओके, इन्फ्लेशन. सो सी, व्हेन कमिंग टू योर अकाउंटिंग, ये जो एफ आर है और एस बी आई है ना, सिंपल है. दी पेपर इज सिंपल एक्सेट्रा. जस्ट टू मेक योर लाइफ कॉम्प्लिकेटेड, लाइफ को कॉम्प्लिकेट करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया इन्होंने? प्रेजेंट वैल्यू. सर अभी प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग क्या है? रोहित विल एक्सप्लेन अस इन बेटर. रोहित ने अभी एफएम दिया है ना. सर सर, ये जो वैल्यू दी है ये इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन है।
ओके ओके, कौन सा? 10 रुपीज। कैन आई से अभी ये जो 2 साल के बाद में 12 रुपए होगा इसका, हाँ हाँ, इसका ये इंक्लूडिंग इंस्टॉलमेंट इन्फ्लेशन। इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन। यस यस यस। बेसिक थिंग टू हैव, कैन आई से टुडेज 1 रुपी इज नॉट इक्वल टू टुमारोज 1 रुपी। आज यस जो सर। 1 रुपए में यस मिलेगा सर। वो कल या परसों नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा उतने में। कभी भी नहीं। नहीं मिलेगा। तो दिस प्रेजेंट वैल्यू ये इंट्रोड्यूस किया है एफआर में टू मेक योर लाइफ कॉम्प्लिकेटेड। एवरी स्टैंडर्ड विल सी सर अकाउंटिंग तो बहुत सिंपल है, बट घुमा के कर रहे हैं अपन, कुछ भी नहीं। नाउ यू ओनली से मी एग्जाम्पल, आई एम सेलिंग असेट टू यू। मैं क्या दे रहा हूं आपको? एक असेट दे रहा हूं। असेट की वैल्यू कितनी है आज मार्केट में? 10,000 डॉलर। 10,000। नाउ यू आर सेइंग सर हम पेमेंट 2 साल के बाद में देंगे। यू आर सेइंग सर वी विल मेक द पेमेंट आफ्टर 2 years। नाउ विल आई स्टिल से दैट यू शुड पे मी 10,000 और विल आई से यू शुड पे मी मोर? इंटरेस्ट लेंगे ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ओके। So can I say after 2 years I will say you have to pay how much? 12,000 12,000। So इसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। टाइम। टाइम आप भी वैल्यू ऑफ बोलो, मनी इज इंपॉर्टेंट और टाइम इज इंपॉर्टेंट। टाइम। टाइम Time. टाइम इसे। टाइम। अंडरस्टैंड दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी नाउ कैन आई से ये जो 12,000 का प्राइस फ्यूचर में रहेगा, कैन आई से उसका प्राइस आज कितना है? 10,000। 10,000। फ्यूचर 10,000. कितना? इन फ्यूचर व्हाट इज द प्राइस? सर 12,000। 12,000। तो 12,000. कैन आई से व्हाट आई एम डूइंग? सर इस 2,000 को आई एम डिस्काउंटिंग टुडे एंड सेइंग इसका वैल्यू कितना है? 10,000। यस। So this is known as what? Time value. So this is also known as what? Opportunity cost. Sir, agar today if you would have given this 10,000, I would have invested in the bank or FD, etc. I would have got 2,000 ka income. So the discounting is very important in your FR also. We should not go in detail. We should just remember the formula क्या है, उसको use करना, बस है उतना. Now I say to everyone, a basic example I'll be taking for discounting. Everyone would have learned simple interest, compound interest. यस। So today, if I say you invest 100 rupees, simple in I say percentage कितना 10. So simple interest में कितना मिलेगा every year? 10, करेक्ट। टाइम 10, पीरियड 10. कितना है? Time period चलो 3 years. सिंपल इंटरेस्ट आता है 130। 130 मिलेगा। यस। Everyone, every year we get 10, 10, 10 on what? 100. So we get in total 130. If I say यही compound interest होगा तो कितना मिलेगा after 4 years, 3 years? 133.1। 133। रोहित ने तो फटाफट बोल दी। अदर्स कैन आई से सर इस 100 पर 10 मिलेगा, सो कैन आई से 100 प्लस 100 into 10%, सो कितना होगा ये 110। अभी यस नेक्स्ट ईयर व्हेन यू गेट इंटरेस्ट, यू गेट द इंटरेस्ट ऑन व्हाट? 110। यस, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। हाँ, दैट इज द रीजन वॉरेन बफे सेज योर कॉम्पाउंड इंस्ट्रूमेंट इज व्हाट? एथ वंडर। सो यस ये सर। कितना होगा सेकेंड ईयर के लिए? कितना होगा? क्या 121। 121। अभी नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा सर? 121 प्लस 121 इंटू 10%, सो वन कितना? थर्टी थ्री पॉइंट वन 133.1। यस। सबको समझ में आया द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पाउंड? नाउ सर डिस्काउंटिंग में क्या यूज होगा? डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर। सो सेम कॉम्पाउंड इंस्ट्रूमेंट, जैसे यू हैव कन्वर्टेड सर 100 से कन्वर्ट क्या किया हमने? 133। नाउ दिस 133 यू शुड ब्रिंग बैक टू 100, इसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग। यस। दिस 133 को अपन क्या करेंगे? वी विल ब्रिंग बैक दिस टू व्हाट? 100। यस। यस, ओके चलो सर। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? सो ये क्या था? इंटरेस्ट रेट। सो डिस्काउंटिंग, राइट डाउन द फॉर्मूला, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर ऑफ एन। आई विल नॉट गो इन टू डिटेल, अपन एफ एम नहीं कर रहे थे, एफ आर कर रहे, जो चाहिए उतना बस है। So now what is the tax rate I have given you everyone here?
टैक्स रेट नहीं, इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ मैंने 10%. 10. सो कैन आई से इसको 1 रख देता हूं, इसको 1. इंटरेस्ट कितना है सर 10. सो आई विल राइट डाउन दिस इन 0.10 टू द पावर ऑफ कितने साल का है ये 3 years. Here I am doing Yes. this for 3 years, so I will take above 3 years. So now how we will calculate sir, इसको कैसे करेंगे सर 1 divided by 1.10 can I say to the power of 3. Yes. Yes. अभी सर इसको नॉर्मल कैलकुलेटर में कैसे करें. आई होप एवरीवन हैज अ कैलकुलेटर. आज से कैलकुलेटर होना चाहिए, विदाउट कैलकुलेटर कुछ काम नहीं आएगा क्लास में. सो नाउ चलो, कैन एनीवन से मी सर इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. जस्ट टेक योर कैलकुलेटर. Plus 10%, plus 10%, plus 10%. ओके देन आंसर आ जाएगा आंसर डायरेक्ट. उस देन 1 डिवाइडेड बाई 1.10 करेंगे, फिर इक्वल्स को 3 बार दबाना होगा, मतलब ओके जितने बार भी चाहिए वो उतने बार कर सकते हैं, इसमें ओके 3 बार होगी। यस. सो एवरीवन अदर्स प्लीज टेक योर कैलकुलेटर. अरे प्रेजेंट वाले करे सॉरी. हाँ कॉम्पोनेंट में नहीं है. ये कैलकुलेट करना, डिस्काउंटिंग करना. 75.1. Yes, yes. सो प्लीज टेक योर कैलकुलेटर. So 1 divided by what should you do? Take 1 divide by 1.10 और इक्वल दबाओ. कितना आ रहा है 0.90. 9099. Okay. Now then for second year again press is equal to 0.826 Yes. और उसके बाद में क्या आएगा एक और बार इज इक्वल टू. प्रेस वन मोर टाइम. 0.751. 751. Everyone got this is known as what? Discounting factor. I will not go into detail, but you have to just understand the concept of time value of money or present value concept. So now sir, now the 0.75 which we have got, इसको multiply करो किससे 133.1 कितना आ रहा है can I say 99.99 आ रहा है, that is equal to Yes, 100 only. 100. So Yes. can I say again we got back what sir 133 से अपन वापस किधर आए 100. Here what you are doing, you are multiplying here. Now इधर क्या कर रहे हैं अपन डिवाइड Divide. करके वैल्यू लेके आ रहे हैं. So for each year can I say discount value will change. अभी today if I say 100 I have, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा फ्यूचर में 90. A basic example. Then this will continue because the value will decrease because of inflation. So सबको समझ में आया डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट. Yes. Others very important when coming to your leases financial instrument, सब में यही अप्लाई होगा. IAS 16 also has a concept of this. चलो now let me give a basic question to everyone. I say that I have to pay you $10,000 after 4 years. मेरे को कब पे करना है 4 साल के बाद. I say the interest rate or the discount rate is 10%. Now please discount this value and say me आज कितना होगा इसकी वैल्यू. What will be the value? 10,000 you have to pay me after 4 years. But you are 6830. 6830. 30. Okay. Others? 6830. So how did you calculate 683? 6830. So we have taken discounting factor का formula 1 divided by 1 plus 0.10 to the power of 4. So 1 divided by 1.10 to the power of 4. Your discounting factor ये कितना आएगा 0.6860. Yes. Yes. Now this we will multiply with 10,000. So value कितना है ये 6860. So the amount which I have to pay today उसका value कितना है sir? We have to do discounting and the value is today 6,860. So with this I hope the basic idea you have regarding your
टाइम वैल्यू कॉन्सेप्ट, डिस्काउंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एफआर. किसी को डाउट्स इसमें प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट, एनीवन, एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी नाउ. ओके, अभिषेक, सिमरन, पूजा, आई होप निर्भय सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट. Yes, sir, clear. ओके, सो विद दिस जो बेसिक था ना मेरे को समझाना था, थोड़ा बहुत हो गया, बस इतना बस है. नाउ वी विल स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड. फर्स्ट लेट अस डिस्कस द डेफिनेशन, उसके बाद में ब्रेक लेंगे, विल कम बैक एंड वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट. सो नाउ एवरीवन, कैन यू सी दिस नाउ? यस. यस. अभी चलो मीनिंग ऑफ पीपी पढ़ना अपन, पहले समझ लो, बाद में लिख लेना. और इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट एंड यू कैन लिसन, नो इश्यूज इन दैट. ओके, सर आप क्या बोलेंगे कि लिख ले कि कैसा करे, फिर मतलब आप बोलेंगे वैसे. वैसे ओके, लिख लो. आई गिव यू 2 minutes, 3 minutes, राइट डाउन दिस, राइट डाउन, नो इश्यूज इन दैट. लिख लो, ज्यादा समझ में आएगा, यू विल रिमेंबर. बट एज आई मेंशन, इधर रट्टा नहीं मारना अपन को, जस्ट वी यस सर. हैव टू नो द बेसिक लॉजिक. व्हेन कमिंग टू एफएम में क्या है, एफएम में थियरी इंपॉर्टेंट है, उसको लिख के प्रैक्टिस करना है, नहीं रोहित? हाँ, बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है. हाँ, इधर नहीं है वो, इधर रट्टा मारना नहीं है, जो समझना है. सर फिर आप समझ के मैं लिख लूंगा बाद में. ओके, पहले समझा दो. पहले समझते. नाउ यस यस प्लीज यस. अंडरस्टैंड, सी नाउ अभी पीपी है, हमने क्या एग्जांपल लिया सर? पीपी का एग्जांपल क्या? मशीन है, बिल्डिंग है, ये है, वो है, सब कुछ है. बट आईएएस ने क्या बोला? आईएएस 16 सी है ना, 3 थिंग्स. पीपी क्या है सर? पहले टैंजिबल एसेट. टैंजिबल एसेट का मीनिंग क्या हमने ऑलरेडी पढ़ा है, विच यू कैन टच. जैसे मेरे यस पास आईफोन है, मैं कैमरा है. बताऊंगा. यस. यस सर. बेर कोई बंदा कॉल कर रहा है. So यस सर. intangible asset basically means which we can touch and see. So PP क्या होगा? हमेशा tangible होगा. It is and here, और नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, समझ लेना. and और में बहुत डिफरेंस है. इन योर FR SBR यही सीखेंगे अपन, and और का डिफरेंस. सो and का मीनिंग क्या? ऑल दी कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड. सो intangible होना चाहिए सर. एंड दिस expected to be used for more than one period. So this means what? सर इसका मीनिंग क्या है? जो अपन के पास टैंजिबल एसेट है ना, दैट शुड बी यूज फॉर मोर देन वन पीरियड. अभी मोर देन वन पीरियड डिफाइन किया है क्या आईएएस ने? नहीं किया. नहीं. सो जनरल सेंस में मोर देन वन पीरियड मीन्स व्हाट? 12 months. 12 months. So if I have an iPhone today, this will be an asset for me because this is providing benefit for me for more than 12 months. I can use this in a basic sense. ऐसे नहीं कि 6 महीने के बाद में खराब हो गया सर, यूज नहीं आ रहा, वो अलग बात है. बेसिक में क्या है? फॉर 1 year वी कैन यूज. यस सर. Now these are very easy. Now the main point of this is this one. Held for. Sir, why are we bringing this asset? Why are we purchasing? This you are purchasing to use in production or supply of goods or service. जो asset है ना, this we are using for our business. सर एक बार स्टार्टिंग से बताओगे? एक्चुअली नेटवर्क कॉलिंग आ गई थी किसी से. अरे बेटे, पीपी का मीनिंग क्या है? पीपी का मीनिंग है टैंजिबल एसेट. टैंजिबल का मीनिंग क्या है? वी कैन टच एंड सी. Sir, and that PP should be what, sir? Should be expected. It's not for sure. It should be expected that we use for more than one period. अभी one period का meaning क्या है? 12 months. Generally, if I purchase a building today, can I say एक more than one period only I use? That means 12 यस महीने यस. benefit. I purchase an iPhone, generally it will work for 5 or 6 years. If I purchase a machinery, the aim will be what? To use for more than one period. So these are the things. Now, why do we purchase this? दिस पीपी इज हेल्ड फॉर, किसके लिए? यूज इन प्रोडक्शन. अगर आपके पास कोई मशीन है, यू आर यूजिंग दिस टू प्रोड्यूस समथिंग एंड सेल इट. और इधर और लिखा हुआ, और सप्लाई ऑफ गुड्स. इफ आई से टुडे आई हैव अ ट्रक, आई हैव अ व्हीकल, विल दिस बी एन एसेट फॉर माय कंपनी?
Yes. Yes, why? Because I'm transporting goods from one warehouse to other warehouse or from one place to another place. या Yes. तो मैं प्रोडक्शन में यूज करूंगा या तो सप्लाई ऑफ गुड्स टू कस्टमर. जैसे यू वुड हैव सीन नो पोर्टर. पोर्टर के पास कितने सारे ट्रक्स है. सो द ट्रक फॉर द पोर्टर कंपनी विल बिकम व्हाट अ पीपी. Yes. Yes. जैसे एसआरएस. ऐसा ना वही है ना बस कंपनी का ट्रैवल्स. SRS नहीं पता sir. हाँ. यस नहीं. सो दैट आल्सो यूजेस योर बसेस फॉर व्हाट. Are they using the buses to provide goods or they are using to provide service? सर्विस पैसेंजर्स को. सर्विस Service. पैसेंजर. So that means either basic point क्या sir PP क्या होगा. PP is the item which is used for our business. Either we manufacture something, either we use to provide or supply goods, or we use this for service. So in Yes sir. my case, I say my assets are what? My iPad, my camera, my PC. Yes or no? I am using this for what? Providing service to you. Yes sir. Clear है. दिस इज क्लियर टू एवरीवन. अभी देखो इधर. सर आई से पीपी का मीनिंग क्या है. टैंजिबल होना चाहिए. इट इज यूज फॉर अ बिजनेस एंड विच इज यूज फॉर मोर देन वन पीरियड. नाउ देयर आर टू मोर थिंग्स हियर. इधर लिखा क्या और लिखा हुआ है. आउट ऑफ दीज थ्री कंडीशन एनी वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड. हम क्या बोलेंगे इसको पीपी. Yes sir. एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. अभी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस का मीनिंग क्या है. वो ऑफिस में यूज कर रहे हैं. For office use, Yes. administrative purpose means basically for office use. If I say I have a very big company, मेरा manufacturing unit is in Gujarat, but I say मेरा office किधर है बैंगलोर में. In my office I have 10,000 laptops and PC. Can I say this 10,000 laptops and PCs are used for what? Day-to-day business activities. Yes yes yes. To manage the business. So administrative purpose का meaning क्या है. To manage your business. Okay sir. और नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जिधर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है. रेंटल टू अदर्स अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग. अभी खाली लिखा हुआ है. मैं एग्जांपल बोलूंगा. यू शुड ओनली से मी सर क्या है क्या नहीं. टुडे आई से दैट आई हैव अ. मेरे पास एक मशीन है. आई हैव व्हाट मशीन. दिस मशीन आई एम गिविंग ऑन रेंट. और मेरा बिजनेस नहीं है रेंट पर देने का. मेरा बिजनेस क्या है. मशीन को यूज करना है टू प्रोड्यूस समथिंग एंड टू सेल इन द मार्केट. बट आई हैव टू मशीन्स एक्स्ट्रा. दिस टू मशीन्स आई एम गिविंग टू रेंट टू समवन एल्स. विल दिस कम अंडर IAS 16? हाँ A16 के भी इसमें आएगा. Okay, Rohit is saying it will come in IAS 16 only. Others? Yes, sir. Yes, Shreya is also saying that only. इधर मैंने क्या लिखा है. Rental to others. Can I say I have given this machine to rent to someone? Is Yes. this rent land and building? ये land and building नहीं है. ये other than land and building है. Land and building के अलावा कुछ भी है मेरे पास. If I give that on rent, it will come under what? IAS IA16. 16 only. I hope this is clear to everyone. अभी एक और Yes. एग्जांपल लेता हूं मैं. I will take one more example. With this example सबको क्लियर हो जाना चाहिए. आई से मेरे पास एक बिल्डिंग है आज. This building I give on rent. This building I give on rent. अभी I say now my business is of what? मेरा बिजनेस ही है रेंट पर देने का. My business is what? Purchasing property, giving on rent. Now you say me, ये क्या होगा? ये पीपी होगा क्या? मेरे पास बिजनेस बिल्डिंग है. रेंट पीपी होगा. I am PP. using this building यस सर पीपी होगा. to give on rent. So can I say अभी कैसे होगा सर? Is this a tangible? Yes sir, ये tangible है. Tangible. Sir, can this be used for more than 1 month? One period 12 months के ज्यादा यूज हो सकता है. Yes sir. Yes yes. Now say me, is this for administrative purpose? नहीं सर, ये तो administrative purpose है ही नहीं. Can I say is this given to rent to others? Yes or no? ये Rent. रेंट Yes पर दिया yes. हुआ है. But is this land or building? ये तो land and building है ना. हाँ. बट मैंने क्या बोला इधर क्या आएगा अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग. बट Yes कैन yes. आई से दिस बिल्डिंग आई एम यूजिंग फॉर व्हाट रीजन टू प्रोवाइड Services. सर्विसेज टू समवन एल्स. नाउ द अदर एग्जांपल. सेम एग्जांपल लेता हूं मैं. आई टेक अ सेम एग्जांपल.
मेरे पास एक बिल्डिंग है, दिस आई एम गिविंग ऑन रेंट, इट्स नॉट माई बिजनेस, मेरा बिजनेस नहीं है रेंट पर देने का। ऐसे ही बोलते ना, कुछ पैसे आ गए, आई हैव परचेज अ बिल्डिंग, आई हैव गिवन दिस ऑन रेंट, आई से माई मेन बिजनेस इज व्हाट, माई मेन बिजनेस इज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अभी बताओ ये पीपी में आएगा क्या? नहीं 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 आएगा, आई नहीं। एस नो सर। 40। दिस विल नॉट कम इन नो सर, पीपी। नहीं आएगा। इसको यस क्या सर, अप्लाई नो। होगा? इसको अप्लाई होगा IS 40। IS 40। 40, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। व्हेन अगेन आई कम टू आईपी आई विल एक्सप्लेन। सबको क्लियर है ये दोनों एग्जांपल से? सो सी, यस सर। सर यस आप ये बोर्ड सर। नोट शेयर कर देना जो आप लिख रहे हो। हाँ हाँ, सारा कुछ शेयर करूंगा रोहित, टेंशन मत। ज्यादा यस यस। स्पेंड योर टाइम ऑन लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। एफएम में यस क्या यस है, यस। लिखना चाहिए। क्वेश्चन इधर हाँ। भी करेंगे, यू हैव टू राइट डाउन व्हाट यस आर, यस यस। बट जो लिखना वही लिखेंगे, चुप के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वैसे। यस यस यस। सो लैंड एंड बिल्डिंग सर, लैंड एंड बिल्डिंग में क्या सब IS 16 में कब आएगा? दिस विल कम इन IS 16 व्हेन इट इज यूज्ड फॉर योर administrative purpose or it is used in production supply of goods or service। IS 40 में कब जाएगा सर? जब रेंट पर दिया और बिजनेस है ही नहीं। और आई से कैपिटल अप्रिसिएशन, कैपिटल अप्रिसिएशन का मीनिंग क्या? टूड आई परचेज अ लैंड, मेरे को मालूम ही नहीं है इस लैंड का क्या करना है, मैंने लैंड खरीदा है, बट आई डिड नॉट डिसाइड वेदर आई विल यूज फॉर बिजनेस, वेदर आई विल गिव टू समवन एक्सेट्रा, मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया। बट मेरा अल्टीमेट गोल क्या था? माई अल्टीमेट गोल वॉज टू मेक कैपिटल गेन ऑन दिस। आज वैल्यू इज 10 लाख रुपीज, आफ्टर 2 years the value will become 20 lakh rupees, so I will say this will become what? Investment property। Now इन्वेस्टमेंट see, प्रॉपर्टी। this will vary if it's an real estate company, पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, we will come to that also, slowly slowly जाएंगे। But till now, basic is clear to everyone. Now, one more question to everyone. I have this building. This building is used for my office purpose. My staffs are there. मेरा sales team इधर है. Manufacturing plant is somewhere else. This office is there. In this sales team is there. Marketing team is there. A lot एडमिनिस्ट्रेटिव of other पर्पस है, work. IS 16। So will this IS 16 apply or IS 40? IS 16। आई 16। IS 16। 16 सर। IS 16। Why? Because I'm using for my business, business के लिए यूज कर रहा हूं मैं। या either it यस। could be a warehouse also, many companies have no warehouse in each state, that also will be what? IS 16 only, because they are using for production distribution to provide goods or यस यस services। यस। So till here सबको definition clear है पीपी का, किसी को किसमें भी इसमें डाउट नहीं है। नाउ कमिंग टू इन डिटेल डिस्कशन जो अपन करेंगे अभी। आई से दैट टुडे यू परचेज दिस प्रॉपर्टी, ये बिल्डिंग आपने परचेज किया, यू सेल दिस बिल्डिंग, और यू परचेज वन और बिल्डिंग, यू सेल दिस, एंड इट इज योर मेन बिजनेस। आपका बिजनेस ही यही है, बिल्डिंग लेना, बिल्डिंग बेचना। योर मेन बिजनेस व्हाट? परचेजिंग बिल्डिंग एंड सेल। ना अभी बताओ, IS 16 अप्लाई होगा, IS 40 अप्लाई होगा? IS 16। 16, आई ओके। 16। IS 16 होना चाहिए 16। सर। IS 16, ओके ओके ओके। नहीं, इन्वेंट्री। IS 2 लगेगा इन्वेंट्री आपका। अरे रोहित ने तो कुछ दूसरा ही बोल दिया सर, आउट ऑफ द बॉक्स ही आ गए सिलेबस से। अरे बाप रे बाप, सबको यही लगेगा नहीं ना? सर अभी IS 2 किया, अरे बाप रे बाप, अभी मैंने क्या सिखाया था इधर? एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 months। 12 months। एम आई यूजिंग दैट बिल्डिंग फॉर 12 months? नहीं नहीं। बाबा, आई एम परचेजिंग, में सेल कर रहा हूं इसको, तो ये यस क्या यस हो यस। जाएगा? IS 16। ये इन्वेंट्री हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री, यस यस। इन्वेंट्री। इसको क्या अप्लाई होगा सर? IS 2। IS 2 अप्लाई होगा। आई आई सो डिफरेंस है, सब में डिफरेंस है, समझ लेना। when many companies will do what? प्रॉपर्टी लेना, प्रॉपर्टी बेचना, प्रॉपर्टी लेना, प्रॉपर्टी बेचना, that will become a inventory for them। ये 16 नहीं होगा। अगर मैंने प्रॉपर्टी लिया है और मैंने रेंट पर दिया है, I have taken a property and given this on rent, it's my main IS business। 16। IS 16।
If I've taken a property, I've given on rent, it's not my business. IAS 40 में चले जाएगा. Yes, yes. So till here it is clear to everyone. So ये था definition of PP. चलो मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है इधर, इसमें से अगर आएगा एमसीक्यू, इफ यू आर लकी एमसीक्यू आ सकता है इससे. जो लिखना है आई विल से यू, बट एज ऑफ नाउ Yes, yes. एग्जांपल देखो इधर. सर लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड फॉर यूज, हमने लैंड एंड IAS बिल्डिंग 16. खरीदा है, आईएएस 16 में जाएगा सर. सर अगर लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सर IAS मेरा 2. बिजनेस क्या है, लेना बेचना, क्या होगा, आईएएस 2. सर लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड फॉर सेल, इधर डिफरेंस है, इधर क्या है, यूज है, इधर क्या है, सेल. Sale है. दिस इज कवर्ड इन IFRS 5. ये आउट ऑफ द बॉक्स है, अपन समझेंगे व्हेन वी कम टू द स्टैंडर्ड. एज ऑफ नाउ बी गुड विद दिस फर्स्ट 2 पॉइंट्स. उसके बाद में सर, सर लैंड एंड बिल्डिंग फॉर रेंट पर दिया. नाउ व्हेन आई गिविंग दिस लैंड और बिल्डिंग, व्हाट शुड आई सी, सर बिजनेस ही है क्या, माय बिजनेस इज ऑफ गिविंग लैंड एंड बिल्डिंग ऑन रेंट, ये क्या होगा, IAS 16. IAS So 16. business is not of giving land or building on rent, ये क्या होगा, IAS 40. 40. Yes, Now sir. any asset other than land and building is given on rent, IAS 16 अप्लाई होगा. लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा कुछ भी रेंट पर दिया है, क्या अप्लाई होगा, IAS 16. Now one more question to everyone, इधर ही देखो. I say that it's a company एक बिल्डिंग परचेज किया. A company has purchased this building nearby its office, and this building is given to rent to employees. Employees को दिया हुआ है रेंट पर, और जो रेंट एम्प्लॉयज आर पेइंग इट इज एज पर द मार्केट ओनली. अभी बताओ, IAS 16, IAS 40, IAS 2 क्या अप्लाई होगा इसके, IAS 40. IAS 40. रोहित इज सेइंग IAS 40. अदर्स, IS 40 sir. IAS 40 सबको Ordinary लगता है. code. ओके IAS 40 एवरीवन आर सेइंग, बट ये IAS 40 नहीं है बेटे. This has been mentioned by IAS 16. Now you only say me, अगर ये कंपनी है, why will a company purchase a building and give this rent to employees? ऑफिस इधर है, दो बिल्डिंग छोड़ के कंपनी ने बिल्डिंग लिया है और एम्प्लॉयज को बोला कि इधर ही रुको, यू स्टे हियर ओनली. नाउ व्हाट इज द मेन लॉजिक और मेन thinking behind the company? Why will they purchase and give this building to rent to come your employees? क्या Convenience के लिए उनके. convenience, so that they can come early, they can work, etc. XY. Yes, So yes, you would have heard a term about companies quarters, yes or no? yes, Company का yes, कुछ yes. रहता है, they allow the employees Government to, quarters. Yes, yes, yes. yes. So this company's quarter will also come in IAS 16. IAS 16. इस पर IAS 14 नहीं अप्लाई होगा बेटे, IAS 16 अप्लाई होगा. MCQ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कभी देखा नहीं है इतना सिले MCQ, बट आ गया, यू हैव टू से IAS 16. सो देखो इधर, ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, कंपनी क्वार्टर्स, बिल्डिंग फॉर स्टाफ अकोमोडेशन, सब किस में होगा, IAS 16. सो दिस वाज Yes, फॉर, sir. हमने क्या डिस्कस किया अभी तक, वी हैव ओनली डिस्कस द मीनिंग ऑफ पीपी. सबको मीनिंग क्लियर है, Yes, sir. यस. सो अभी हो गया सर, अभी ब्रेक चाहिए सर, बहुत टाइम हो गया सर, ब्रेक लिया ही नहीं है. चलो अपन अभी ब्रेक लेते हैं. वी विल कम बैक एंड वी विल लर्न द रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट टुडे. सो अभी क्या टाइम है, 7:52. Hmm. So everyone, be back by 8:10. And now when you take a break, please do not sit at the same place. Please roam around. उधर ही नहीं बैठना. So please roam around. Do not sit at the same place. Take a break, everyone. We will continue at 8:10. Okay, sir.
चलो 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 एवरीवन, कम बैक कम बैक कम बैक. Yes or no in the chat box. Thumbs up. नहीं तो. Okay, so you're saying yes, sir. Okay, okay. Pooja also saying yes. Okay, Abhishek also mentioned yes. So any doubts in the meaning? Definition में किसी को doubts है? नहीं है? चलो then. Now starting with the first thing, can I say we have covered what? Sir, meaning हो गया. Now we will start with recognition. Now we will start with what? लिखना है क्या? हाँ, ये लिखना है. Now you have to write down. Write down everyone the heading recognition and write down this. Make rough notes, जैसे flow chart, so that it becomes easy for you to revise. PP sir PP कब record करेंगे? When should we recognize PPE? Two conditions should be met. अभी two condition met होने के लिए क्या होगा? And होगा, और कभी भी नहीं होगा. So what is the first condition, sir? Probable future economic benefit should be there. Economic benefit are expected to flow to the entity. So इसका मीनिंग क्या हुआ? When do we recognize this and PP? We recognize PP when there is future economic benefits, and that future economic benefit should be what? Probable. So probable का मीनिंग क्या है? Can I say more than 50%? Probable का मीनिंग क्या है सर? More than 50% that we will get. And what? And cost can be measured reliably. Cost can be measured reliably. So इसका मीनिंग क्या हुआ? Sir, when should we recognize a PP? PP कब record होगा? जब future economic benefit. Today if I say I have a machine, can I say from this machine मेरे को future economic benefit मिलेगा? Yes or no? Either I will sell, I will manufacture. And cost can be measured reliably. Sir, अभी इसका cost का meaning क्या है? We will cover this in detail. In detail, very important. मैंने बोला ना, a first question cost question can be regarding cost. So cost का basically meaning what? Today if I go to a market, I pay $10,000 and purchase the machine. So cost कितना हुआ? $10,000. अगर मेरे को असेट रिकॉर्ड करना है, इफ आई वांट टू रिकॉर्ड असेट, कैन आई से मुझे मॉनिटरी टर्म्स में मालूम होना चाहिए ना. आई शुड नो इन मॉनिटरी टर्म्स व्हाट इज द अमाउंट. सो बेसिक व्हाट इज द जर्नल एंट्री वी पास. अगर डेबिट क्रेडिट क्या होगा? कैन आई से डेबिट पीपीई क्रेडिट कैश. अभी इसको किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करें? दिस विल बी रिकॉर्डेड एज कॉस्ट. अभी कॉस्ट का मीनिंग क्या है? एज ऑफ नाउ, as I mentioned, I am paying $10,000 to acquire a machinery. So this becomes the, so recognition. When will we recognize? अभी ये recognition criteria repeat होगा. IAS 40, IAS 38. It will be same. When probable that future economic benefits will flow to the entity and cost can be measured reliably. Cost का meaning basically means we should know हमने कितना पे किया. If you don't know कि सर हमने कितना पे किया, will you be able to record a journal entry? जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए नंबर चाहिए, नंबर नहीं है तो होगा भी नहीं रिकॉर्ड. सो दिस इज द रिकॉग्निशन. सबको क्लियर है? रिकॉग्निशन बहुत छोटा है. नाउ द नेक्स्ट वन, राइट डाउन एवरीवन. नेक्स्ट वन, इफ आई से इफ recognition criteria is not being met, उस
what we will do, if recognition principle is not met, is not satisfied, then what do we do? If recognition is not satisfied, then we record in P&L as a expense. इसको asset record करेंगे क्या? नहीं. If I say today I purchase asset but मेरे को economic benefit नहीं मिलेगा, it will directly go to P&L. Now अभी P&L में हमने 3 कैटेगरी पढ़ा. We learned 3 categories. First one was what? Operating. Second one was investing. Third one was finance. अभी ये किस में जाएगा? This will go to operating category. Till here the basic is clear. So with this we have completed the recognition. Recognition किसी को कुछ doubts नहीं है. So now starting with the next part, your measurement. Measurement. Measurement, there are 2 types of measurements. Initial measurement, subsequent measurement. Everyone clear? Now initially का meaning क्या है? Initial means today. Initial का meaning क्या है? Today at what value we will record. Today का meaning क्या है? When we purchase it. When we purchase. Subsequent का meaning क्या है? At each balance sheet date. At each balance sheet date. No idea what is this. Initial. Now initially किस पर record करेंगे sir? Cost. Initially will record at cost. Subsequently either we will follow cost model or we will follow revaluation model. Sir, अभी इतना तो समझ में आ गया सर. Initially means what? Today when we purchase the asset. Subsequent का meaning क्या है? Once we purchase the asset, at each balance sheet date, at what value we will record. So now cost का meaning क्या है? Revaluation का meaning क्या है? Let me discuss first a basic. Today I say I purchase an asset at 10,000. ये 10,000 क्या मेरा? Cost. Can I say when I initially purchase I recorded what? Cost, sir. So what is the entry I pass? Debit credit क्या होगा? Debit asset credit cash. 10,000 10,000. Now I basically say इसका useful life कितना है? I say this has a useful life of 5 years. Now if I say this asset is 10,000, इसका useful life 5 years है. Now what do we do with this 10,000 और 5 से क्या करते हैं अपन? Depreciation. Yes or no? Every year I am using this asset, so my depreciation, मेरा expense कितना होगा? 2,500 2,500. अरे नहीं sorry, 2,000 2,000 2,000
2000 and the last year also 2000. ये सबको आता है हो. Again we will cover depreciation क्या है वो, but basic. Now you only say अभी ये बैलेंस शीट डेट है कि नहीं. Now Yes. balance sheet date. What is the carrying amount? अभी asset की वैल्यू कितनी होगी बुक में? Sir, 8,000. 10,000 was there. 8,000. 2,000 we recorded depreciation. So 8,000 is the value of the asset. Now why do we charge depreciation, sir? Because we are using the asset. जैसे हम use कर रहे asset को, the value of the asset will come down. And as per matching principle, this asset is used to generate revenue और उसके related expense है 2,000. इसको बोलते 8,000. Now second year पर कितना होगा? After second year, can I say second year will be how much? Sir, 8,000 minus 2,000. ये कितना होगा? 6,000. 6,000. अभी ये कितना होगा? 4,000. This will continue. अभी can I say this is known as what? This is known as initial recognition. इसको क्या बोलते हैं? Subsequent measurement और subsequent recognition. Now under subsequent हमारे पास कौन से मॉडल है? Cost मॉडल है और revaluation. It's all here. It's a choice with the company. So अभी जो मैंने एग्जांपल बोला ना ये 6,000 से, so we are following what model? Subsequent measurement. नहीं, Subsequent. Subsequent में कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं अपन? cost model sir, cost model. Cost model. Everyone clear? अभिषेक, निर्भय, सिमरन, नेहा, पूजा, पूर्वी. Yes sir. Yes. Yes, sir. So this is इसको Yes. क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं कॉस्ट मॉडल. ये लिख लो एग्जाम अंडरस्टैंडिंग के लिए. देन कोई नहीं पूछना चाहिए सर कॉस्ट मॉडल डिफरेंस क्या है, रिवैल्यूएशन का डिफरेंस क्या है. कॉस्ट का लिख लो ये. हाँ हाँ हाँ, यस यस. आई एम गोइंग वेरी स्लो. ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट इनिशियल, बिकॉज वंस वी कम टू अदर स्टैंडर्ड सब में यही रिपीट होगा, इनिशियल सब्सीक्वेंट. अभी मैंने जर्नल एंट्री पास नहीं किया, खाली आई हैव रिटन ओनली वन जर्नल एंट्री. द अदर जर्नल एंट्रीज विल कम टू दैट लेटर. Now this next one is what? Revaluation model. Now revaluation model में क्या होगा? I hope everyone have written this. हो गया ना सबका? Yes, sir. Yes. चलो now coming to revaluation model. Same example. Asset की वैल्यू कितनी है? 10,000 सर. यूजफुल लाइफ कितना है? 5 years. So first year, second year, third year. So what is the depreciation each year? 2,000. So first year का depreciation. So can I say initial recognition किस पर होगा? Your initial measurement. Initial measurement will always be at what? Cost. Can I say when coming to subsequent, when coming to your each balance sheet date, we either have cost model or revaluation model. Now this depends upon the company. Company के ऊपर depend है whether they will use cost model, revaluation model. Depends on company to company. Now if I say cost model होगा तो कितना होगा carrying amount? 10,000 minus 2,000 कितना होगा ये? 8,000. 8,000.
अभी सर रीवैल्यूएशन मॉडल में क्या होगा? रीवैल्यूएशन मॉडल बेसिकली मींस फेयर वैल्यू। सर अभी ये फेयर वैल्यू क्या है सर? फेयर वैल्यू बेसिकली मींस जो मार्केट में रेट है, व्हाट इज द मार्केट सेइंग यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मशीन इन द मार्केट. Today if I say the value of the machine in the market is 12,000, now you only say me, will you show your asset at 8,000 or 12,000? If you follow cost model sir, हम 8,000 पर बताएंगे. If I say you're following revaluation model, at what value you will show your asset? 12,000. 12,000. 12,000. Now अभी 12,000 when you are showing, इसमें क्या है? Can I say there is a increase of how much here now? 4,000. 4,000. सर अभी ये 4,000 किधर जाएगा? Can anyone link with the format which I have given to you? रिवैल्यूएशन सरप्लस में. Revaluation surplus. इसको क्या बोलते हैं सर? Revaluation surplus. We will come to this again. I will come into detail of this. But as of now, I just wanted you to understand cost model का difference क्या है? Revaluation surplus. This revaluation surplus किस में record करेंगे? OCI. From OCI it will go to OC. OCE. नाउ यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, सर इसको पीएनएल में क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? यस और नो? सर अगर मार्केट में वैल्यू बढ़ रही है, 12,000 हो रही है प्रॉपर्टी या मशीन की, व्हाई आर वी नॉट रिकॉर्डिंग दिस 4,000 इन दी पीएनएल? नाउ यू Not ओनली. an ordinary profit. Okay, not an ordinary profit. Now when you purchase any PP, is your intention to sell in the market or to use it? Use it. यूज Use इट. it. यस और नो To use एवरीवन? it. यूज करना, असेट को यूज करना, यूज करके बेनिफिट लेना है, बेचना नहीं है. सो कैन आई से योर इंटेंशन इज नॉट टू सेल दिस एंड मेक मनी? सो दैट इज Yes. रीजन वी शो दिस इन ओसीआई. हम पीएनएल में नहीं पता. इफ आई शो दिस इन पीएनएल, कैन आई से माय प्रॉफिट्स विल इंक्रीज? Yes. प्रॉफिट विल इंक्रीज. कैन आई से मैनिपुलेशन इज Yes, डन? sir. Yes. Yes, sir. This will Yes, not sir. give faithful representation. This will not give true and faithful representation. ये Yes, sir. किधर देगा ट्रू एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन? इन ओसीआई. अभी सबको समझ में आया रीवैल्यूएशन मॉडल का मीनिंग क्या है, कॉस्ट मॉडल का मीनिंग क्या है? So with these two basic examples, I hope everyone have understood. So please write down this also. मतलब सर रिवैल्यूएशन सरप्लस को हम ओसीआई में डायरेक्टली उसे Record वो कर. करेंगे, Yes, yes. रिकॉर्ड करेंगे. यस सर. ओके सर. ओसीआई से किधर जाएगा? ओसीई, ओसीई इन योर बैलेंस शीट. अभी आई हैव मतलब नॉट. फर्स्ट यू पहले विल. ओसीआई. यस. ओसी. तो अभी पीएनएल में क्या बताएंगे? कैन आई से पीएनएल में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे 2,000 इस साल का? यस. Yes, sir. Yes, sir. इन ओसीआई, पीएनएल का ही पार्ट ओसीआई. ओसीआई में क्या लिखेंगे? रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है? 4,000 सर. बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड होगा? सर बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट में हम रिकॉर्ड करेंगे पीपी कितना? 8,000 की 12,000? 12,000. 12,000. सर अभी ये इक्विटी में क्या रिकॉर्ड करेंगे? इक्विटी में ओसीई में कैन आई से रीवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड करूंगा 4,000 में. ये प्रेजेंटेशन. नाउ कमिंग क्लासेस एवरीथिंग आई विल डू दिस. आई विल राइट डाउन पीएनएल, आई विल राइट डाउन बैलेंस शीट. पीएनएल में क्या जाएगा, बैलेंस शीट में क्या जाएगा, अपन सीखेंगे each and everything. And the examiner will ask you this only. The examiner will ask you what is the carrying amount of the pp in the books, what is the revaluation surplus in the books. So आपको मेंशन करना क्या वैल्यू है. अगर ये समझ लिया ना आपने इतना, ये बेसिक ऑफ IA-16 हो गया है, समझ लो. कुछ नहीं, अभी इधर उधर थोड़ा बहुत है जो पूछता है एग्जाम में. द एग्जामिनर आस्क, वी विल डू दैट. सिंपल. सर बट रिवैल्यूएशन सरप्लस तो 2000 होना चाहिए ना. बट हमने जैसे पीपी हमने परचेज प्राइस पे 10,000 पे हमने परचेज किया है. 10,000 पर परचेज किया, क्या नहीं से पीपी की वैल्यू गिर गई, हमने यूज किया ना. जब हम यूज करेंगे हाँ पीपी की वैल्यू गिर जाएगी. हाँ हाँ. तो उस, ये तो क्या है, कैरिंग अमाउंट. इसको कंपेयर करेंगे किससे? 12,000. यू विल नेवर कंपेयर व्हाट? फेयर परचेज प्राइस टू फेयर. नेवर कंपेयर दिस. कंपेयर कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू. राइट डाउन दिस, इसको लिख दो. कंपेयर कैरिंग अमाउंट एंड फर्स्ट टू क्लासेस यू विल फील, बट एज वी डू नो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा. कंपेयर कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू.
Do not compare cost. We will come in some cases, we will compare the cost and the fair value only. We will come to that case also. वो इसमें नहीं है. So with this, everyone has a basic idea. Sir, cost का मीनिंग क्या है, revaluation का मीनिंग क्या है. Now a basic question to everyone. सर अगर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होता तो आई से ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी वैल्यू 8,000 है 12,000. नाउ विल यू स्टिल टेक दिस 4,000 इन ओसीआई और पीएनएल? OCI. OCI. Rohit is saying OCI. Others, अगर this was an investment property, my business is not, my intention is to just get rent etc. बिजनेस है क्या आपका? बिजनेस नहीं है. बिजनेस होता तो पीपी हो जाता ना. यस यस यस. बिजनेस नहीं है. आई से इट्स नॉट अ बिजनेस. मेरा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है. आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. आई परचेज अ बिल्डिंग. मैंने रेंट पर दे दिया. एंड व्हेन आई गिव दैट, उसमें भी क्या है, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल है. दोनों Yes. मॉडल उधर भी. Now in that case, will you take this 4,000 in PNL or OCI? PNL. P&L. PNL. Why this? Why we take to PNL? Can I say intention है क्या इसको रखने का? नहीं नहीं. कभी भी नहीं रहता है. Today I purchase, मेरे को कोई ज्यादा दाम दे रहा है. If some हाँ person, सर. someone is giving me more value of that property, I will immediately sell. यस यस. Again we will revise that. Again अपन देखेंगे difference क्या है. So till here I hope सबको clear है सर. Cost model क्या है, revaluation. So with this, we have completed the measurement basic. Now, chalo, let us go into detail which is tested for your exam. So please write down here. Now, what does cost means? Sir, cost का meaning क्या है? Very important. मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि why is this not coming? The settings has been changed. पूरा पैक. So please write down cost. Cost का meaning क्या है? Cost includes any directly attributable cost necessary to bring the asset to the location and condition required for it to be capable of operating in the manner intended by the management. सर इतना बड़ा है definition of cost, but if you understand it will be easy. So basically cost का meaning क्या? Cost means what? Any expense which I incur to bring the asset to what? To the location and condition required by whom? By the management. For what purpose? So that it is in the operating need. Now if I say today I go to the market, I purchase a asset. मैंने एक asset purchase किया 10,000 rupees. मैंने broker को 2,000 rupees दिया. Now that broker amount should I include in the cost or not? Yes sir. Yes or no? Because होना चाहिए सर. management ने क्या Yes sir बोला है? होगा. Management mentioned that the PP which I purchase should be in what? Working condition. Yes or no? जब तक working condition में नहीं आएगा, जितना भी expense है उसको क्या करेंगे अपन? Add कर देंगे. We take to the cost. Now if the management is saying what?
I need this machine at the third floor, fourth floor. To take this machine from the ground floor to third floor, वो भी cost include होगा किसमें? Cost. मशीन, यस, सबको क्लियर है ये? So basic meaning क्या है? The management is saying, whatever is the management saying, till that, until the asset is in that position, whatever cost is there, we have to capitalize. Capitalize का meaning क्या है? Asset की value बन जाएगी वो. But asset कितना purchase? Today I say I purchased the asset for 10,000, but I paid installation. Installation का cost था 2,000. I paid brokerage 2,000. So can I say what will be my cost of the PP? Can I say 14,000 हो जाएगा? यस, Yes, sir. Okay. So this is clear. सबको समझ में आ गया cost का मीनिंग. अभी now the examiner asks a lot of time the cost. Now I will show you in the notes a lot of items are written. उससे बाहर कभी भी examiner नहीं पूछेगा, वही आएगा. Now you only say, can I say there be? Can we say either I will purchase a asset? Can I say either I will develop a asset in my company? यस, Yes or no? दो चीज हो सकता है. Yes, sir. Yes or no? Either I will purchase an asset or develop. Now you only say, if I say I purchase a PP, उसका cost तो easy है ना निकालना, हमने सीखा. अगर I say you are developing, let's take मेरे पास एक land है, I want to build a building. This building is for what? Factory. ये क्या है? I want to construct a factory on this. Now when I construct a factory, मेरे को क्या क्या लगेगा? What will I require? लैंड का कॉस्ट, लैंड का कॉस्ट. ओके, रोहित इज सेइंग सर लैंड का कॉस्ट भी ऐड करेंगे अपन. यस और नो? हमको Electric, Raw materials electricity जो आप यूज expenses, करोगे. raw materials. रॉ मटेरियल, देन लेबर का कॉस्ट. कैन आई से ओवरहेड्स, मेरे को गवर्नमेंट को भी पे करना पड़ेगा? गवर्नमेंट टैक्सेस, Yes, sir. गवर्नमेंट टैक्सेस. कैन आई से गवर्नमेंट को सम परमिशन कॉस्ट एक्सेट्रा, लॉट ऑफ थिंग्स. और कैन आई से आई विल गिव टू आर्किटेक्ट ऑल्सो, मेरा डिजाइन बना दो, यस, आर्किटेक्ट फी. और समटाइम्स क्या होता है, व्हेन वी परचेज अ लैंड इन हिली एरियाज, कैन आई से लैंड ऐसे होता है, वी हैव टू यस, लेवल द लैंड, उसको पहले रेडी करना पड़ेगा, वो भी कॉस्ट इसमें ऐड कर लूंगा. सो दीज Yes, sir. all are what? These are the costs to make the factory or to make the factory. The management is saying what? Factory को ready करो. So to make the factory in a ready condition, can I say we have to incur all this cost? ये सारा किधर जाएगा? Add हो जाएगा. Can I say sometimes when I purchase a PP, मेरे को टेस्टिंग करना पड़ेगा? यस, Can I say अगर आज I purchase a PP, मैनेजमेंट विल से दैट इट शुड बी इन अ रेडी कंडीशन. अभी मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि रेडी है कि नहीं है? मेरे को टेस्ट करना पड़ेगा ना. आई हैव टू टेस्ट द मशीन. सो व्हेन आई टेस्ट द मशीन, कैन आई से आई इंकर सम कॉस्ट? यस, सो दैट टेस्टिंग, Yes, sir. Yes, sir. that testing also will become the part of the cost. ओके, जब when I do testing, can I say मेरे को कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा? यस, इनकम आएगा, Yes or no? I normally purchase a PP, कुछ ना कुछ I do testing, I get some of the other output. Now can I say I can sell this output or not? यस, अगर मैंने मशीन परचेज की है, आई परचेज अ मशीन, आई मैन्युफैक्चर 5 टी-शर्ट, कैन आई से आई कैन सेल दिस 5 टी-शर्ट्स और नॉट? अभी जो Yes, sir. when you sell this output, what will you do? अगर I say your testing cost is 10,000 or when you're selling this output you are getting 8,000, what will you say is your cost? Will you say your cost is 8,000 or 2,000 or 10,000? 8,000, कॉस्ट पूछ रहा हूं मैं. कॉस्ट तो 10,000 रहेंगे, 10,000. 10,000. 10,000. कैन आई से ये तो मेरा कॉस्ट है. यस, व्हाट? रेवेन्यू जैसा. बट Yes. मेनी स्टूडेंट्स विल डू सर हमारा नेट कॉस्ट कितना है सर? 2,000. ये नहीं करना है. यस और नो? नेट में कॉस्ट कितना हुआ? नेट में तो कितना है? 2,000, 2,000. But when we do the calculation of IAS 16, do we take 2,000 as the cost or 10,000? We will take 10,000, 10,000. 2,000 नहीं लेंगे. ये भी क्लियर है सब. So with this, I hope मतलब सब. मशीन को पुट टू यूज लाने में जितना भी हमारा कॉस्ट है वो कॉस्ट है. Yes, simple.
Okay, simple. I will not come up with easy sentences. I want you to come up with easy sentences. I can teach, I can say. But as we Yes, go sir. with the syllabus, I want you come up with easy, simple sentence, sir. कैसे याद होगा? Because it depends to person how you remember. Now a question to everyone. छोटा सा क्वेश्चन. अभी ट्रेड डिस्काउंट है, सेटलमेंट डिस्काउंट है, हमने पढ़ा है. Yes. Now you only say which one should you consider for the cost. Will you consider trade discount? Will you consider settlement discount? Settlement Trade discount. discount. Trade Settle. discount. Trade discount. Okay. Rohit is saying settlement, some is saying trade. Okay. Now Rohit, when you हाँ mention settlement, someone mentioned trade discount. When हाँ I say the intention क्या था management का? Intention was to bring the asset to the yes yes fund. Can I say when we want to bring the asset to the location or the condition which has been mentioned by the management, yes can I yes say मेरे को क्या मिलेगा? Trade discount, trade discount मिलेगा yes yes settlement discount we will not consider. okay Okay, ये भी एक छोटा point है where students will make mistake. Now I say something. आज मैंने फैक्ट्री ओपन किया. I call some chief guest. मैंने खर्चा किया. I have kept a party etc. Will I add that also to the cost of the factory? no no No. No, no. No, sir. IA-16 क्या बोलेगा? IA-16 बोलेगा कि मैनेजमेंट का क्या ड्यूटी था? मैनेजमेंट मेंशन टू ब्रिंग द फैक्ट्री टू द कंडीशन. yes yes मैनेजमेंट डिड नॉट मेंशन यू गिव अ पार्टी, यू एंजॉय एक्सेट्रा. वेन एवर इनॉग्रेशन, जैसे किसी को बुला लिया रिबन कट करने के लिए, यू पे सम, वो सब कॉस्ट में नहीं आएगा. वो किधर जाएगा? सीधा पीएनएल में. P&L पीएनएल में किस? P&L. पीएनएल विच कैटेगरी? ऑपरेटिंग कैटेगरी. Expenses. operating Operating. category ऑपरेटिंग कैटेगरी. Operating category. सो सबको क्लियर है लॉजिक? सो Okay. नाउ चलो ये सबको क्लियर है. लो सी नाउ इन द नोट्स आई हैव रिटन ईच एंड एवरीथिंग. उसको मैं वापस नहीं लिखूंगा. आपको समझ में आ गया ना क्या yes yes क्या क्या एक्सक्लूड. इंपॉर्टेंट इज दिस वन. सो नाउ प्लीज सी हियर वी यस किधर है आपका क्लास नोट्स. यस. सो ये भी कर लिया हमने मेजरमेंट. अभी देखो इधर. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ? अभी वापस आ गए है. मैजिक है कि क्या है मालूम. जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है अभी इसमें लिखा हुआ. सी अलो. Can I say there can be two types? Either I purchase a PP, either I construct. So purchase of PP, can I say whatever amount I pay? Then one thing, can I say non-refundable cost or import duties? This will form the part of the cost. जैसे if I purchase a PP from USA, America, so can I say I have to pay some import duties? yes yes So can I say to bring that asset to India to bring into working condition? Can I say मेरे को pay करना पड़ेगा ना? yes yes So import duties. Now this should be what? Non-refundable. ये क्या होना चाहिए? non-refundable Non. अगर if I say the government is paying you back the amount, will you include in the cost? no नहीं. Because जैसे इंडिया में है ना, in India we have GST. First you pay, again you claim back. yes So yes it will never be the cost. अगर आप 10,000 दे रहे हो, वापस again the government is paying you back 10,000. So is this your cost? No. no sir You are paying, you're getting back. ये cost नहीं है. So yes yes only non-refundable will be taken to this. Sir, then finance cost. IS 23 condition satisfied. This is something else. अगर आपने आज लोन लिया है, I say 10,000 rupees loan you have taken, you pay 10%. So कितना इंटरेस्ट है? 1000 1000. So normally interest को किधर, where do we record this? P&L P&L P&L. We record in P&L as an expense. Basically, whenever I take a loan, I pay 1,000. मैं किधर record करूंगा इसको? P&L में P&L straightforward. P&L. But you have one standard. इस standard का नाम क्या? IS 23. This IS 23 says that if certain conditions are satisfied, instead of taking this to P&L, what you can do? You can add to the cost of the asset. क्या कर सकते हैं अपन इसको? cost of the asset में ऐड कर We can add this to cost of the asset. Sir, अभी ये condition क्या है? We will cover in the next week. अभी नहीं. So as of now, remember in the question it will be mentioned if the conditions are satisfied, you will take it. अगर condition satisfy नहीं हुआ तो किधर record करेंगे अपन? सीधा P&L
पीएनएल में कौन सी कैटेगरी, विच कैटेगरी? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग, फाइनेंस को, फाइनेंस, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग. नाउ से लॉजिक से समझो. फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग नो, बिकॉज यस हमने यस लोन लिया किसके लिए? फाइनेंसिंग, टू डू दी फाइनेंसिंग. सबको यस यस। क्लियर? नाउ लीगल कॉस्ट. कैन आई से सम और दी अदर लीगल कॉस्ट आई हैव टू पे? स्टैम्प ड्यूटी, वो सब कुछ चार्जेस रहेगा, उसको भी अपन करेंगे. कैन आई से आई पे सम डिलीवरी कॉस्ट? ट्रांसपोर्ट करना है, मशीन हैज टू बी फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर, ट्रांसपोर्ट करना, वो भी इंक्लूड करेंगे. कैन आई से इंस्टॉलेशन भी इंक्लूड करेंगे? यस. यस Stamp duty cost, like when you purchase any land etc you have to pay some duty, stamp duty to the government, वो भी ऐड होगा. Can I say site यस, preparation cost? Site preparation का मीनिंग मैंने एग्जांपल दिया ना, हिली एरिया, यू प्रिपेयर द लैंड, वो भी इंक्लूड होगा. कैन आई से प्रोफेशनल फीस और आर्किटेक्ट फीस? यू आर पेइंग सम लॉयर, यू आर पेइंग टू द आर्किटेक्ट टू डिजाइन, वो भी इंक्लूड होगा. कैन आई से एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स? व्हेन वर्कर्स आर वर्किंग ऑन द फैक्ट्री, उनको सैलरी देंगे अपन, दैट आल्सो विल कम हियर. Then can I say direct material, labor, overhead cost on construction? जैसे यस सर। I take an example in this one. Understand, this regularly comes in single entity question. Today I want to construct a factory. अभी जब मैंने factory, when I want to construct a factory, I purchase a JCB, and this is specially for this factory only. Can I say this is what a PP for me? यस इस PP पर depreciation होगा कि नहीं? यस होगा। That depreciation also will be part of the cost of the factory. This item or the PP which I'm using for the construction, also the depreciation will go to cost of the factory. सर ये फिर से बता दूँ? कैसे होता सर अपन? अगर जैसे जेसीबी में रेंट पे लिया हो तो भी ये कॉस्ट का पार्ट बनेगी? रेंट पर लिया तो होगा क्या? अगर नहीं आपने होगा। रेंट पर लिया होगा क्या? आप ही आप सोच. रेंट पे देते हैं, हमने उन लोग रेंट पे नहीं देते। आप बेसिक, हमको रेंट पे देंगे। you will take on rent. Can I say why have you taken this on rent? Why have you सो लाइक taken? फैक्ट्री, Can फैक्ट्री रेडी करने के लिए। factory ready? Can I say सर directly है कि नहीं? यस रिलेटेड किससे रिलेटेड है? दिस जेसीबी विच हैव टेकन इज रिलेटेड टू व्हाट? फैक्ट्री। फैक्ट्री. तो फैक्ट्री, कॉस्ट में जाएगा ये भी. बट इफ आई से सर ये जेसीबी वी आर यूजिंग फॉर 3 to 4 पर्पसेस, जब होगा क्या? नहीं, दिस इज नॉट रिलेटेड टू फैक्ट्री, यू आर यूजिंग फॉर मल्टीपल पर्पस. कैन आई से इन दैट केस इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट व्हाट इज द अमाउंट दैट विल गो टू द पीपी. इतना यस एग्जामिनर नहीं पूछेगा. This detail the examiner will straightforward say that to construct the factory you are using a asset, that asset has a depreciation and it is used for this purpose only, then you will capitalize it. As and when we move to the standards और detail होगा. The testing cost किसको doubt है इसमें? We have discussed testing cost. Then can I say insurance on transit? When I purchase any PP I create a insurance on that also. Yes or no? Sir बहुत यस valuable item है, from US it is coming to India. If it creates a issue, the cost of the factory, the item is more, so this insurance also will. Now trade discount को क्या करेंगे? Trade discount we will reduce it. Yes or no? We will reduce from the cost of the asset the trade discount, and you will get what sir? Cost of the PPE. क्या मिलेगा हमको? Cost of the PPE. Now in this I have not covered this one point, this 12th point, and this is the important part in IAS 16. ये IAS 16 का very important part. Any doubts to anyone? What will be included in cost? सर सर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का क्या सर बोला था आपने? क्या क्या? इंश्योरेंस ऑन ट्रांजिट का। हाँ, इंश्योरेंस जैसे इफ आई से आई परचेज अ पीपी फ्रॉम यूएस, और मैं दी आई से दैट दी पीपी इज कमिंग थ्रू शिप, मेरे को ओके। रिस्क क्या होगा? द रिस्क इज व्हाट? हाँ रास्ते में डूब जाएगा तो हाँ, सो कैन आई से मेरे को डर लग रहा है, सो व्हाट विल आई टेक? आई टेक अ इंश्योरेंस. इंश्योरेंस। ओके तो जब मैं इंश्योरेंस लेता हूँ आई विल टेक दिस ऑल्सो इन दी कॉस्ट. ओके ओके। सर ओवरहेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का सर एग्जांपल सर बताएंगे? एग्जाम्पल ओवरहेड का एग्जाम्पल बेटे ये जो मैंने दिया ना जेसीबी का, वही है.
अपन जैसे क्वेश्चन करेंगे ना, लो लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, एक्सक्यूज मी। I say I want to construct a factory. Same example. When I want to construct a factory, I am using some PP. I am using what? Some PP. Can I say is PP per kya can I say on this PP we calculate depreciation or not? Yes. Yes, अभी ये sir. जो PP है ना, this PP I am specifically using for this factory only. मैंने purchase किया एक PP. I have purchased a PP today. I am saying this PP I will be using to construct what? The factory. Can I say this is directly related or not to the factory or not? Yes. So if I say Yes, directly sir. related, can I say जो भी इसका PP का depreciation होगा, that also will become what? The cost of the factory. Yes. Yes. If I say मैंने एक PP लिया, but this PP I am using for multiple purpose. Will you know what is the amount that is allocated to this PP? No. No, no. No, sir. So in that case we will not take. मैंने कभी इतना डिटेल एग्जाम क्वेश्चन नहीं देखा, बट आई एक्सप्लेन यू, अगर आएगा एग्जाम में तो इट विल बी मेंशन स्ट्रेट फॉरवर्ड कि दिस ओवरहेड इज अलोकेटेड टू दिस प्रॉपर्टी ओनली और दिस बिल्डिंग और दिस पीपी यू हैव टू ऐड। ओके बेटे? Yes. Yes, sir. यस, नाउ सी दी कॉस्ट विच आर एक्सक्लूडेड। सर कौन से कॉस्ट को अपन नहीं ऐड करेंगे? लाइक योर स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट। सर मशीन को रन करने के लिए स्टाफ को ट्रेन करना वो कभी भी नहीं आएगा, इट विल नॉट कम। Administrative and general overheads. Your general overheads, like here and there some expense, normal business expenses, that also will not come. Sir, advertisement cost, that also will not come. Cost of opening a new facility or inauguration cost, I mentioned no, वो भी नहीं होगा। Yes. Day to day repair also will, can I say day to day repair तो revenue expenditure हो जाएगा, this also will not Yes, sir. come. Any Yes, sir. selling and allocated overheads, this also will not come. Initial operating losses. Sir, when I purchase this machine for the first 5 months, 6 months, I have losses. Can I take this as the part of the cost? नहीं होगा, Mm. लॉजिक भी नहीं बनता है वो कभी भी। Then cost of relocating or reorganizing the part of the entity's operation. That means I am shifting the machinery from one place to other place. That also will not be considered. Yes, sir. Then abnormal losses. Sir, abhi this is very important. This also comes in your exam. अभी abnormal loss का मीनिंग क्या है? See here, everyone. Today I say that basically I construct my factory. When I construct my factory, normally the contractor is saying that we require 100 kgs of cement. कितना? 100 kgs. Can I say here and there we will assume what? 105 चाहिए? Yes or no? Yes. But when we are constructing the factory, the workers are not working properly, or they have totally used 150 kgs of cement. Now you only say me, इसमें नॉर्मल लॉस कौन सा है, abnormal लॉस कौन सा है? सर 105. नॉर्मल Normal लॉस loss is 105 5 kg. 5 है और एबनॉर्मल लॉस 50 है। 50 है। Can I say out of this 5 is what? Normal loss. हाँ। Abnormal कितना होगा? Can I say 45 होगा? 45. Yes. 45। यस सर। Basically you would have seen normally जब your in this also in what we say we have tankers also no, जो पानी सप्लाई करते हैं। when you book a tanker they will normally say sir capacity कितना है 1000 लीटर, बट वो क्या बोलेंगे सर अल्टीमेटली आपको कितना मिलेगा? 950 मिलेगा, बिकॉज when we come Yes. from this distance 50 लीटर will be wasted. वो कैन आई से वो तो नॉर्मल है, कैन आई से यू हैव टू Yes. Yes. फॉर दैट। अगर 1000 का 500 हो रहा है, अभी आप ही बोलो विल यू पे फॉर 1000 और विल यू पे फॉर 500 ओनली? देन यू विल पे फॉर 500. 500। 500। यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि सर 50 तो वेस्ट होगा, बट विल यू से कि सर आउट ऑफ 1000 500 लीटर विल बी वेस्टेड व्हेन इट स्टार्ट? ये abnormal, दिस इज नॉट रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस क्या? 50 liters is wasted. So here abnormal, do we include the abnormal part in the No. cost of the asset? नहीं। Now नो सर। in the exam क्या होगा? In the exam, in the MCQ question, the सर examiner, आप लैग कर रहे हो क्या? नहीं तो others? नो सर। No. No, sir. नो सर। Okay, ओके सर. okay बेटा। नॉर्मली मैं क्या बोलूंगा? We will not include, but question में include हुआ है, what should we do? We have to remove it.
Normally the examiner will do what? No, they will Yes, yes. include this in the cost. आपको क्या करना है? आपको रिमूव करना है. क्वेश्चन बराबर से पढ़ना है. You have to read the question carefully. Then sir, purchase of maintenance contract. When you purchase any maintenance contract, I say that today I'm paying 10,000. I am paying $2,000 also for maintenance. Will I include this in the cost? नहीं होगा. No. No. Because this is for maintaining. This is not a capital expenditure. So these are the things which we have discussed here. सबको clear है cost का meaning क्या है? Yes. Now will you include settlement discount? Settlement No, discount no. नहीं होगा. No. If you get any revenue from the asset, will you reduce the cost, testing cost? नहीं करेंगे. No. So with this, your basic of cost is done. Now we will do what? We will solve questions. अभी लिखो चलो now. You have to solve questions. Write down question number 1 and start. Let us start doing the question. मैंने सबको notes भेजा है ना? So topic wise questions are there below. So see here now. First question, cost related. सर हाँ. इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस और एबनॉर्मल लॉस में क्या डिफरेंस होगा? Operating loss or ऑपरेटिंग लॉस और एबनॉर्मल लॉस. operating loss का meaning means what? When I'm using this PP, अभी मैं use कर रहा हूँ PP and I'm manufacturing something. When I manufacture something, let's take it is costing me $10,000. और मेरे को रेवेन्यू कितना हो रहा है? आई एम ओनली एबल टू सेल दिस फॉर 8,000. मेरे को लॉस कितना है? 2,000. 2000. ये क्या? ये ऑपरेटिंग लॉस है. व्हेन आई एम यूजिंग दिस एंड आई एम डूइंग द बिजनेस, मेरे को लॉस कितना? 2,000. बट अबनॉर्मल का लॉस का मीनिंग क्या? अबनॉर्मल लॉस मींस इट इज रिलेटिंग टू सम मटेरियल व्हिच वी आर यूजिंग. यस और नो? कुछ ना कुछ रिसोर्स यूज कर रहे हैं अपन एसेट को बनाने के लिए. डिफरेंस है वो खाली abnormal loss है. दिस इज ऑपरेटिंग लॉस. ऑपरेटिंग लॉस व्हेन आई यूज दिस मशीनरी I incur some losses. When will I incur some losses? When I manufacture some more and I'm not able to sell it. Yes or no? Okay. So वो include नहीं होगा बेटे. So please see the first question everyone. Don't write the question, just write down cost, answer number 1. Question क्या? Calculate the cost of the factory. सर सॉल्व कर दें. हाँ करो सॉल्व. चलो चलो ट्राई करो ना. I will also do, but first try it by yourself. मैंने एक्सप्लेन किया सब कुछ, क्या ऐड होगा क्या नहीं होगा. Now, do we include the cost of the land बेटे इसमें? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Do we include trade discount? No, sir. No. But we will subtract it. Subtracted. Yes or no? Trade discount include होगा, but क्या होगा इधर? Subtract होगा. Then next one, non-refundable taxes. क्या नहीं से इसको क्या करेंगे अपन? Add करेंगे. ऐड करें. Non-refundable taxes 40 को add करूंगा. After this, construction material. Material add for 2004. And Abnormal losses. Abnormal losses को क्या add करेंगे क्या? नहीं. नो नहीं. सर. Abnormal losses I will ignore. 0. सर स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट है. सर स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे क्या? Less. नो सर. नहीं. नहीं Subtract. सर. वी विल टेक दिस ऑल वेयर टू पीएनएल में जाएगा सीधा एक्सपेंस. किस कैटेगरी में Yes, जाएगा? ऑपरेटिंग कैटेगरी. लेबर चार्जेस. कैन आई से टू कंस्ट्रक्ट द फैक्ट्री वी आर पेइंग द लेबर्स? कैन आई से दिस इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल? सो ये कितना? Yes, sir. Yes, sir. 3,000 वी विल इंक्लूड इट. आर्किटेक्ट फीस. आर्किटेक्ट को फीस दे रहे कितना है? ये 25 वी विल ऐड. यस सर. Now you say me survey fees. Survey, to do the survey to construct the building we have to do some survey. We are paying that
सो ये भी ऐड होगा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल. नाउ साइट स्पेसिफिक ओवरहेड, कैन आई से ये स्पेसिफिक किसके रिलेटेड है? साइट के रिलेटेड. कैन आई से वी विल ऐड दिस? यस मैंने यस। बोला यस सर. क्वेश्चन में मेंशन होगा स्पेसिफिक. अगर जनरल मेंशन है तो क्या करेंगे अपन? नहीं ऐड करेंगे P&L. नहीं ऐड करेंगे. हाँ, देन उसके बाद में नाउ देखो नेक्स्ट, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इंक्लूड होगा क्या? आप ही बताओ. नहीं नहीं, ये इंक्लूड नहीं होगा. कैन आई से डायरेक्टली टू पीएम. उसके बाद में फायर अलार्म सिस्टम टेस्टिंग, ऐड होगा. कैन आई से ये भी ऐड होगा. जब बिल्डिंग यस बनाते यस। हैं फायर अलार्म वी कीप नो फॉर व्हाट? सेफ्टी पर्पस. 10 दिस विल ऐड. और उसके बाद में एनुअल बिजनेस टैक्स फर्स्ट ईयर. पूरा आंसर इसके ऊपर ही डिपेंड है. अभी इसको सर इंक्लूड. अभी आप assumption क्या लेंगे उस पर? अरे रोहित ने बोला कि सर अजम्पशन क्या लेंगे. अभी अभी अजम्पशन की इधर कुछ भी नहीं दिखा लिखा हुआ है. जस्ट क्वेश्चन आया एग्जाम में, क्या करोगे? आपने इधर क्या बोला सर. है? एनुअल बिजनेस टैक्स, यस और नो? ये यस. बिजनेस रिलेटेड है. इज दिस रिलेटेड टू फैक्ट्री? नो नो. नो सर। ये नो नो फैक्ट्री नो रिलेटेड नो. नहीं है. सो क्या करेंगे इसको भी? P&L. पीएनएल जीरो. सो अभी और कुछ है क्या पेंडिंग? ओ, सेटलमेंट डिस्काउंट दिया हुआ है. सेटलमेंट डिस्काउंट ऑन मटेरियल परचेज, डू वी कंसीडर दिस सेटलमेंट? नो नो. सर। Not now, sir. वी हैव परचेज व्हाट 2400 का मटेरियल, बट उन्होंने 20 रुपीज का डिस्काउंट दिया. डू वी कंसीडर दैट? नो. ये सेटलमेंट डिस्काउंट है. सेटलमेंट डिस्काउंट कभी भी नहीं आएगा, ओनली ट्रेड. अभी बताओ कितना है कॉस्ट? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस नाउ? 1200 minus 50 plus 40 plus 2400 plus 3000 plus 25 plus 15 plus 150 plus 10. I am getting 6790 by 10. 6790. Yes, sir. सबको ये आ रहा आंसर? यस सर। अब नॉर्मल वी हैव Yes, नॉट sir. इंक्लूडेड. स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट हमने इंक्लूड नहीं किया. जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हमने इंक्लूड नहीं किया. बिजनेस टैक्सेस इंक्लूड नहीं किया. सेटलमेंट डिस्काउंट ऑन मटेरियल वी हैव नॉट इंक्लूडेड. सर अगर वहाँ पे मेंशन नहीं रहेगा बिजनेस टैक्स तो फिर क्या करेंगे? बिजनेस टैक्स का मीनिंग क्या है? इट्स नॉट फॉर फैक्ट्री, नो बेटे. अगर उन्होंने मेंशन किया इट इज फॉर फैक्ट्री, देन व्हाट कैन आई से? इट इज रिलेटेड और नॉट? यस. सर जो आपने साइट स्पेसिफिक ओवरहेड है वो 300 है, बट आपने 150 लिया है शायद, आई थिंक से. ओके 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 ओके. इससे मैं बोल रहा हूँ आंसर मेरे को हाँ सर, वो गलत हो गया है, मैंने भी सिक्स चेक किया. नाइन थ्री जीरो 6930 30. 40 है. 40। 40. 40 आएगा सर. यस. ओ, सब एक्टिव है इसका मीनिंग. ओके, क्लास में ऐसे ही करूंगा मैं. श्रेया नोज दिस. कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा सब क्वेश्चन में. यू हैव टू बी एक्टिव एंड यू हैव टू से सो दैट यू रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग. अभी क्वेश्चन वन किसी को किसी में दिक्कत इसमें? आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है. क्वेश्चन वन डन. नाउ चलो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर टू. Everyone start doing it. See why I am doing three questions here now for cost, because when I come to intangible and investment property मैं वापस टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. अंडरस्टैंड दैट? हाँ. So that is the reason if your IS 16 is good, the coming 4 to 5 standards पूरा easy रहेगा. कुछ भी नहीं, सेम ही है पूरा. Here and there some differences आता है. So second question. Can we start? यस. So थोड़ा तो रुक जाओ सर. अभी क्या क्वेश्चन में तो मजा आना चाहिए ना when you're solving questions. So please see now. A Limited began construction of a building for its own use.
ऑन व्हाट? 1 अप्रैल 2000 कब स्टार्ट किया कंस्ट्रक्शन बेटे? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को। डेट इंपॉर्टेंट है एफआर में. व्हेन कमिंग टू एफआर, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट. बट व्हेन यू कम टू एसबीआर, कैलकुलेशन इतना नहीं है, पूरा थियरी है उधर. सो सी नाउ, कैन आई से परचेज प्राइस? डू वी इंक्लूड दिस परचेज प्राइस बेटे? यस। Yes, sir. Yes, sir. डू वी इंक्लूड स्टैम्प ड्यूटी सर? हाँ सर, स्टैम्प Yep. ड्यूटी भी इंक्लूड करेंगे. डू वी इंक्लूड लीगल फीस? Yeah. यस Yes. sir. डू वी इंक्लूड साइट प्रिपरेशन एंड क्लियरेंस? Yeah. Yes. Yes. यस Now, do we include material? Yes, sir. Yes. Yes. Material. यस Do Sir, we? but there is an adjustment, material हाँ. cost. Yeah. We'll come to that. But as of now, material include होगा बेटे. लेबर भी सर इंक्लूड करेंगे सर. Yes. सर आर्किटेक्ट फीस भी इंक्लूड करेंगे. जनरल ओवरहेड करेंगे क्या? नहीं। नहीं सर. इसको रिमूव कर. No, sir. बट इन्होंने क्या नीचे कुछ लिखा हुआ है ना सर, मटेरियल के लिए कुछ दिया हुआ है. कैन आई से and some other note are given. 3 points they have written. Normally you would have done in class 11th and 12th, ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ ना कुछ देते. Yes or no? Now चलो, let us read here now for material what they are saying. Excuse me. Material costs were greater than anticipated. Okay. What they are saying here? जो हमने एंटिसिपेट किया ना उससे ज्यादा है. Now that means what basically? Abnormal. कैन ऐसे कुछ ना कुछ abnormal loss हो सकता है इधर? Yes, yes. Yes or no? Yes. My Yes, point. Just reading this, a point comes into my mind. Sir, abnormal loss हो सकता है. On investigation, it was found that the material costing how much? 10 million. हमने इधर कितना मिलियन ऐड किया हुआ है? This is how much? How many million? ये कितना मिलियन है? Can I say ये तो 100 million है? Yes. प्लीज डू नॉट डू मिस्टेक इन अंडरस्टैंडिंग मिलियंस. हाँ, उसमें मिस्टेक नहीं करना. अगर छोटा भी मिस्टेक हो गया, पूरा आंसर रॉन्ग होगा. Then now, chalo. Okay, 10 million of this material costing have been spoiled and therefore wasted, and a further 15 million was incurred on material as a result of faulty design work. अभी now you only say, can I say ये जो इस 100 million में हमने क्या include किया? 10 million include किया. On this upon we have included 15 million. Yes or no? Yes. Can I say ये abnormal है? Yes, yes. Now, what is the total cost here? Abnormal kitna total? Can I say 25 million in total is abnormal here? Yes, sir. Yes. Because the spoiled part, faulty design, it's not a normal activity. It's a abnormal. So that means, can I say पूरा 100 million include करेंगे क्या अपन cost में? नहीं, नहीं. नहीं. So how much we will include in cost? Only we will include 70. 75. इसमें किसी को दिक्कत नहीं. Now next point sir. इन्होंने क्या बोला है? As a result of these problems, work on the building ceased for a fortnight during October 2007, and it is estimated that approximately 9 million of the labor costs relate to this period. अभी उन्होंने क्या बोला इधर? सर लेबर कॉस्ट कितना है टोटल? 150 million. But in this 150 they are saying what बेटे? उन्होंने क्या बोला है? 9 million is what? Is also the labor cost. Yes or no? Yes. But this 9 million कब पे हो रहा है? Can I say this 9 million is paid when? During this, can I say the building was seized? In that case, are we doing the construction for that period? No, no. अगर अपन construction नहीं कर रहे, at that time when I paying the labors, will this be directly related to the construction part? No. Now you only say, should I include this? No. सर एक बार फिर समझा दीजिए, लेबर वाला समझ नहीं आ रहा, कुछ डाउट Okay है. बेटे. So labor cost कितना बेटे? 150. 150 million है. Yes, sir. Yes. What they mentioned here, as a result of these problems, some problem is that. Problem किसमें था? Can I say ये faulty design में problem था? Yes. Yes, sir. During that period, can I say the building was seized? Building पर कुछ काम नहीं चल रहा है. Yes. अगर building पर कोई काम नहीं चल रहा, you will still be paying the labor. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Now this amount which you pay to labor, is this directly related? In that period, building seized, construction नहीं हो रहा था. So if construction is not happening, will we consider this as the cost, part of the cost? No. नहीं. No, sir. No, sir. No.
सो किधर लेके जाएंगे, ये पीएनएल में जाएगा. सो कैन आई से आउट ऑफ 150 कैन आई से 9 million आई विल नॉट कंसीडर. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Then last one. The building was completed on 1st July 2008 and occupied on what date? 1st September. So building कब complete हुआ? 1st July. Can I say इधर एक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? Labor cost is given till what date? 1st July only. Yes or no? Yes, sir. So can I do now the calculation? चलो अपन कर सकते हैं अभी calculation. So now what is the cost? Can I say first thing we record what? Purchase price. Purchase price कितना है? 250 million. Yes, sir. So I'll write down 250. I'll write down everything in millions. You can write down in thousands also. No issues बेटा. उसके बाद में सर स्टैम्प ड्यूटी कितना पे कर रहे हैं अपन? 5,000. अरे कैंसल की कॉपी चल 500. Can I say 5 million? Okay. After this, sir, legal fees कितना बेटा? Legal fees is 10,000. 10 million. Site preparation 18. 18 million. Now material का कितना? 100 million. Can I say 25 is abnormal? 75 होगा रिकॉर्ड. उसके बाद सर लेबर कितना है सर? लेबर का कॉस्ट कितना टोटल? 150. कैन आई से इस 150 में 9 क्या है? विल नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज ड्यूरिंग दैट पीरियड कंस्ट्रक्शन नहीं था एंड इट इज abnormal बिकॉज ऑफ व्हाट? दिस स्टॉपेज जो स्टॉप हुआ ना वर्क वो abnormal रीजन के लिए हुआ है. Yes, yes. सो कितना ये 141 होगा ये. Yes. और आर्किटेक्ट फीस था 20 million. अपन ऐड करेंगे इधर. जनरल ओवरहेड्स, डू वी इंक्लूड जनरल ओवरहेड्स? No. नो, No. जीरो. So तो अभी कॉस्ट कितना है? चलो सेम ही 250 260 590. 519. 519. Okay, that means everyone are quick. So while we are solving the sums, like हम लोग को क्या ये exclude जो हो रहा है वो भी दिखाना पड़ेगा? नहीं नहीं बेटे, ये तो सब एमसीक्यू के लिए है. नोट्स कोई दिखाने की कोई जरूरत नहीं. सेक्शन सी में वी विल कम टू दैट. सेक्शन सी में लिखना पड़ेगा आपको सिंपल लाइन. You should write down general overheads will not be included because it's from the business point of view. It's not directly related to factory. When coming to raw material, labor you say it is because of abnormal and abnormal we will not include. बस इतना लिखे तो बस ACCA will give you marks. Okay, sir. So सबको I hope this is clear. The question number 2. Yes. Now I hope now there is a good base regarding your cost का calculation. Now one more question I have given in the notes. Yes or no? Yes. Now Yes, sir. now हमने जब कॉस्ट पढ़ा I mentioned that I have not explained the point 12. Now I am explaining you. Can I start with this? Yes. Yes. चलो. Yes, sir. Now coming to the cons. Write down now everyone. सब लिखो ये. Provision for dismantling cost. Provision for dismantling, restoration. A lot of terms are there which the examiner use. Dismantling, restoration, or removing, a lot of things. Cost. So now let me take an example. Let's take, this is R Limited. Today R Limited is purchasing a mine. What they are purchasing? A coal mine. When we purchase a coal mine, हम क्या करेंगे? Can I say first the company will purchase the land? When we dig, we get coal. Yes. Now when you do a contract with the government, you normally take this for 50 years. Yes or no on lease? Yes, sir. हम 50 years पर लीज पर लेते हैं. मैंने फर्स्ट क्लास में क्या बोला था? इवन दो इफ आई टेक दिस ऑन लीज, कैन आई से मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा? असेट और नॉट. मैंने बोला था Asset. एसेट भी रिकॉर्ड. नाउ यू ओनली से व्हेन आई डू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट, मैंने गवर्नमेंट को बोला कि आई विल यूज दिस लैंड फॉर माइनिंग, आई विल टेक आउट कोल, आई विल सेल. नाउ व्हेन यू डू दिस,
Can I say government will bring one condition with you today only? Yes. What can be the condition? Restoration of land. Restoration का मीनिंग क्या है? उसको अच्छे कंडीशन में लेके आओ. Can I say if you have taken a land, now you have digging it, you should what? Can I say refill the land? और Yes. इसके ऊपर कुछ plants you have to plant it. The government will say no. Basically, the government is saying that you are creating pollution or you are harming the environment. Today only in the contract we say that you have to do what? You have to restore this. You have to incur some expense. So can I say this expense will be in future? ये एक्सपेंस फ्यूचर में होगा ना, अभी तो नहीं होगा. सो नाउ यू ओनली से कैन आई से दिस इज ऑल्सो अ कॉस्ट और नॉट? विदाउट दिस अग्रीमेंट कैन आई यूज दिस लैंड फॉर माइनिंग पर्पस? I have to sign the contract today only. Can I say to bring this land into operating? Can I say I have to agree this 10,000? Can I say this 10,000 Yes, sir. will be part of the asset? Will be part of the asset. But sir, we are paying this after 10 years. When we are paying this? After 10 years. Now when you're paying after 10 years, when you include this value, can I say will you include 10,000 or will you do discounting for this? Discounting. Discounting do- factor. You will apply discounting. When you apply discounting, I say the value comes. Assumption, I say the value will come to 5,000. When you do discounting, value kitna hai? 5,000. So what is the entry we record? This 5,000 you will include in the value of the asset. 5,000 we include here. सर क्रेडिट क्या होगा? यू रिकॉर्ड क्रेडिट एज अ प्रोविजन. सर अभी प्रोविजन क्या है? एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड प्रोविजन इज अ लायबिलिटी. कैन आई से मेरे को मालूम है आज ही फ्यूचर में मेरे को इंकर करना है कितना? 10,000. Today only I know that in future I have to transfer some economic resource. So कितना वो economic resource? 10,000. So what do we record? Debit, asset, credit, provision. So कितने का record करेंगे अपन ये? 5,000, 5,000. सबको क्लियर है ये? Yes, sir. अभी can I say this 5,000 after 10 years should become what? 10,000 ना? So Yes. what will I do? Every year I will say that is 5,000 per, I will apply the interest. So every year I will apply the interest and I say this will become my interest expense and we increase your liability. Now we Q, kya, Y, coming to the point. Can I say when we discount something, can I say उसको वापस unwind करना पड़ेगा, उसको वापस open करना पड़ेगा so that we reach till 10,000. जैसे एक spring, you have a spring. Can you say when we press it will become small? Can I say slowly can I increase this or not? वैसे Yes. provision, this discounting will also work. Today I discount and I say 5,000, but ultimately मेरे को कितना पे करना है sir? We have to pay 10,000. So slowly every year I will increase this amount so that at the end of In 10th the form of interest expense, आप slowly you're doing this. yes at the 10th year can I say this will ultimately become वापस 10,000. 10,000. ये 5,000 बढ़ के कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा. सबको क्लियर द डिस्काउंटिंग एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ? Yes, sir. Yes. Now let us do a question which is given in your notes. So please see the question which is given in dismantling part. I have given one question. Let us do this one question. So please see everyone the question. Now you only say A Limited purchase a oil rig. That means they are purchasing something relating to oil business. For how much? 5 million. So today how much we are paying to acquire the oil rig? 5 million.
Additionally, it incurs what? Installation cost of 2 million. Now you only say what will be the value that we will include in the cost of the oil rig. Can I say we will include 5 million? Upon include karenge because we are paying. Can I say this installation cost also I will include in the cost of the oil rig? Yes. The company estimated that the decommissioning cost of 2 million will be incurred after how many years? 6 years. And the discount rate is what? 5%. Now what they mention, calculate the present value of the decommissioning cost. So हमको क्या calculate करना है? Decommissioning cost we have to calculate. Then pass the initial journal entry for the recognition of the oil rig and related provision. So now you only say what is the cost of the asset. Can I say we paid purchase price कितना है? 5 million. Can I say installation cost कितना है? 2 million. Can I say we should also add what? Dismantling cost. But this dismantling cost will be at what value? Present value. So अभी present value कितना है इसका? After 6 years, what is the cost? 2 million. But please discount and say me कितना value रहेगा आज इसका? Your discounting factor formula क्या है? 1 divided by 1 plus r to the power of n. So 1 divided by 1.05 to the power of 6. चलो चलो same ही the values. I'm audible, no? 0.746 0.746 0.74. 7462. So round it off to 3 decimals. So can I say it will be 6? Yes, sir. So what will be the value? Can I say 2 million into 0.746? So बेटे कितना होगा ये value? 14 point 1.492. 1.4924. 24. Okay. So this is the value which is today's. So now you only say, can I say अभी इधर कितना add करूँ? Can I say 1.92 I will add? So what is my total cost of the PP? Oil rig का? Can I say 5 plus 2, 6, 7, 8.49 is the cost of the oil rig. Now journal entry पास करना. Journal entry कैसे पास करेंगे अपन? Can I say asset की वैल्यू कितनी है? 8.49. Now provision कितना क्रिएट किया हमने? So provision we created 1.49. 49. अभी क्रेडिट क्या होगा? Can I say cash is going out of the 7 million? Can I say हमारा journal entry tally हो गया? Debit side is equal to the credit side. So this is on what? On first day. Now you only say me. इस provision को क्या करेंगे? Can I say this provision we will do what? Unwinding. Yes or no? We will do this unwinding. So unwinding कैसे होगा sir? Can I say 1.49 है? What is the percentage we have discount? 6. Now use the 6% to calculate the interest expense every year. So be 1.49 we have recorded. So how much is 0.8094? So how much will this be? Plus 1.49. ये कितना हो जाएगा? 1.5794. सर नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा? 1.5794 इंटू 6%, 0.09476. So plus 1.5794. This becomes 1.6741.
1.6741 into 6%, 0.1004. So plus 1.6741, 1.7745. Then next year 1.7745. This will continue into 6%. ये कितना है? 0. रेट तो 5% है ना? रेट 5 है क्या? अरे यार, हाँ सर. shit. So if you do this 5%, so after 6 years, what will you get the value? After 6 years, the value कितना हो जाएगा? ये 2 million हो जाएगा. 2 million. Yes, okay. So now क्या रिकॉर्ड करेंगे? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 1.49 इंटू 5%. कैन आई से फर्स्ट ईयर 0.075745, 0.0745. So what we record, sir? डेबिट क्रेडिट क्या करेंगे? सर वी इंक्रीज द प्रोविजन. सर लायबिलिटी को बढ़ाएंगे 0.0745 and then we record this as a interest expense in your P&L, 0.0745. So every year you keep on doing this. और ये P&L में जाएगा और प्रोविजन का वैल्यू कितना हो जाएगा? सर 1.492 plus 0.0745. So this will be 1.5645. This now in P&L क्या बताएंगे अपन? Can I say in P&L we show depreciation and we show OCI. Did I mention anything about the useful life? कुछ भी मेंशन नहीं है. बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड करेंगे सर? नॉन करंट एसेट. एसेट की वैल्यू कितनी है एज ऑफ नाउ? 8.49. कैन आई से अंडर नॉन करंट लायबिलिटी आई विल रिकॉर्ड व्हाट? प्रोविजन. सो प्रोविजन की वैल्यू कितनी है? 1.5645. Understood everyone? Yes sir. Yes, others? Simran, Neha, Purvi, Nirbhay, Yes, sir. Yes sir. Rohit. So till here, I hope there is no doubts to anyone. So today what we have covered the definition, we have covered recognition, we have covered the basic of measurement, और हमने time value का concept सीखा. So tomorrow again I will discuss time value, I will revise it and I will say some other points regarding time value. I did not mention each and everything in the first class only or the second class because it will be a little bit hectic for you. So ये था regarding this one, cost, and this was the dismantling part. So now please see here in your notes you have a question number 3. Yes or no? Question number 3 mention hai you have to do this question as your homework. I will discuss in the class tomorrow. Please try once. What should you do? Try it out. Let us see what will be the answer from your side. सबको clear है ये? So what is today's homework? Question number 3. Question number 3. Try it. Wrong मिलेगा चलेगा. You have to try and you have to learn from your mistakes only. You will find a lot of things. सर बहुत lengthy है question, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा. No issue. Try it. Try to get simple marks. If the question comes in section B, try to get simple marks like this is correct, this will be added or not, this will be added or not. Try that one. Okay everyone? Yes, sir. Okay, sir. Yes, okay then. So tomorrow the rest part we will continue. So tomorrow what we will do? Tomorrow we will try to discuss your capital revenue expenditure. Already clear है सबको. Again I will discuss tomorrow and then we will start with exchange of asset concept. Then we will start with depreciation. कल अपन depreciation start कर लेंगे. So please Okay, sir. try this question this question what we say, question 3, and in your MCQ you can, no issue, MCQ first MCQ you can do better. MCQ 1 also you can do. Then
Then MCQ 24. 24th and 1 you can do it. Easy है, कुछ इतना कुछ same नहीं, problem नहीं है. So please सर try. MCQ 24. MCQ 1, first one, then 24th. MCQ 1 and 24th and your question number 3. It will not take more than 10 to 15 minutes. जो क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया ना वही है सारा कुछ रिपीटेड उसमें. So with this, I hope the today's session was good and you have understood the points जो हमने आज कर. So keep the habit of just now know. Tomorrow morning just spend 20 to 25 minutes and revise it. So you do cumulative revision, याद रहेगा. ऐसे नहीं कि सर पूरा सिलेबस होने के बाद में हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में कुछ भी याद नहीं रहेगा. So now, anyone, any doubts in today's class? नो सर. No? सर जो आपने जो क्लास नोट्स जो आपने लिखे हैं हैंड रिटन नोट्स वो व्हाट्सएप पे हाँ कर वो दोगे कर सर? दूंगा. Yeah, I will मैं share देख it. पाऊँ. I will share it. ओके सर. Okay, no issue. So by this can we end the session now with this? यस सर. Yes. Bye bye. Yes. Have a good day. Good night. Radhe Radhe to everyone.